Hari-katha Krishna-katha Govinda Swami Shiv Gurudev ki jai. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Hari-katha Krishna-katha His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Hari-katha Krishna-katha His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Ram Sikho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Shri Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kund Radha Kund Giri Govardhana ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Mayapur Navadvip Dham ki jai. Shri Kshetra Jagannath Puri Dham ki jai. Ganga Maya ki jai. Jamuna Maya ki jai. Bhakti Devi ki jai. Tulasi Maharani ki jai. Shri Shri Gaurani Tai ki jai. Shri Shri Krishna Balaram ki jai. Shri Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devi ki jai. Shri Shri Radha Gopinath ki jai. Shri Shri Radha Gopal Ji ki jai. Shri Shri Radha Madhava ki jai. Jagannath Baladev Lady Subhadra Devi ki jai. Prema Nam Sankirtan Jagdi ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Transcendental Book Distribution ki jai. Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru, Shri Gopanga Mahaprabhu, Srila Prabhupada, Srila Gurudev. Oh, Hare Krishna. That was a nice kirtan. बहुत ही अच्छा कीर्तन था. Everyone must have been praying. सभी लोग बहुत प्रार्थना कर रहे होंगे. Hearing and chanting and praying on the Lord's lotus feet within the heart. श्रवण कीर्तन करना और भगवान के चरण कमलों में अपने हृदय में ध्यान लगाना. It said this is the best process. बताया जाता है ये है any other process. सारी प्रक्रियाओं में सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया है. To get immediately purified, तुरंत शुद्ध होने का, immediately enlightened, तुरंत जागृत होना, and for all the bad stuff to go away, और सारी बुरी चीजें बाहर चली जाएंगी, and some bhakti devotional mood to come up in your heart and your mind. और हृदय और मन में कुछ भक्ति का भाव जागेगा. There's no better way. It's direct connect. ये कोई इससे बेहतर तरीका नहीं है. सीधा सीधा You संपर्क don't have to go through your intellectual, mental speculation आपका अपने मानसिक और बौद्धिक and your मनोधर्म पे जाने की जरूरत नहीं. scholarly approach of understanding the Vedas कितने विद्वान होकर आप वेदों को समझने का प्रयास कर रहे and हैं overcome the namaparad and the mental speculation while chanting. और नाम अपराध या मनोधर्म से कैसे मुक्ति पा सकते हैं. Mahaprabhu has made it really, really simple, straightforward. महाप्रभु ने बहुत ही सरल और एकदम सीधा तरीका बनाया है. He made in the Yuga Dharma. उन्होंने ये युग धर्म बनाया है. Just come together wherever you are in Daivi Varnashram system. जहाँ भी हो आप दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार बस Even he made it more simple than that. यहाँ तक कि He combined all of the different sampradayas. यहाँ तक कि सारे अलग अलग संप्रदायों को So उन्होंने let's even stop all of that different confusion. तो वो भी भ्रम बंद कर दिया. One sampradaya एक ही संप्रदाय in Jagannath Puri जगन्नाथपुरी में under Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर That's where it started. जहाँ से ये शुरुआत हुआ. He brought all of the sampradayas together, सारे संप्रदाय को वो एक साथ लेकर आए and everything there is with Mahaprabhu. और सब कुछ महाप्रभु के साथ है. And he said what is the Yuga Dharma, और उन्होंने युग धर्म का स्थापना किया. what is the religious practice emphasized in this age of Kali, most sinful, degraded age, कलयुग में सबसे ज्यादा अधम और पापमय युग में धर्म क्या है. to the most disqualified people. सबसे ज्यादा अयोग्य लोगों के लिए He's made everything super, super simple. उन्होंने सब कुछ बहुत ही ज्यादा सरल बनाया. Wherever you are in Daivi Varnashram system, आप जहाँ भी हो दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था में just come together बस एक साथ आइए with sincere devotees of Krishna कृष्णा के एक निष्ठ भक्तों के साथ and dedicate yourself to hearing and chanting in that association. और अपने आप को समर्पित कीजिए श्रवण और कीर्तन करने में. Emphasizing the Shravanam, hearing
about Krishna. और विशेष करके कृष्णा के बारे में श्रवण करना, इस पे जोर Because even you're chanting without purified mind and consciousness, we cannot chant properly. क्योंकि बिना शुद्ध मन और चेतना के हम सही तरीके से भगवान का नाम नहीं ले सकते। Because we're maintaining material desires, material attachments. क्योंकि भौतिक इच्छाएं आसक्तियां हम बनाए हुए हैं। We're so distracted on bodily हम platforms. शारीरिक स्तर पे इतने भटके रहते हैं। Complete anxiety, worry, plan making. पूरी तरह से चिंता, मन में योजना बनाते रहना। What about this? What about that? What about this? What about that? इसका क्या, उसका क्या, इसका क्या। So we cannot hear our chanting properly. हम अपने जप को सही तरीके से सुन We're नहीं पाते। completely distracted, पूरी तरीके से भटके and रहते there's हैं। a lack of purity in that chanting. और साथ ही हमारे जप में शुद्धता की So कमी। Krishna is not manifesting in that तो chanting कृष्णा उस नाम में प्रकट नहीं हो रहे हैं, because consciousness is not right. क्योंकि चेतना सही नहीं है। So easier than that is just sit and hear Hari-katha Krishna-katha. उससे भी आसान है, बस बैठिए और हरि कथा कृष्ण कथा श्रवण कीजिए। Pray to Krishna, please give me that association where you will manifest and speak through, whoever they may be, wherever they may be. और कृष्णा से प्रार्थना कीजिए कि जहाँ पे भी आप प्रकट हो रहे हो, मुझे वो संग दीजिए, जहाँ भी हो, जो भी हो। Because Krishna knows. क्योंकि कृष्णा को पता We है। don't know who are these people. हमें नहीं पता ये लोग कौन हैं। Many people saying Krishna, Krishna, Krishna. बहुत सारे लोग कृष्णा 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 Many बोल रहे हैं। people quoting shlokas. बहुत सारे लोग श्लोक बोल रहे हैं। Many people talking philosophy. बहुत सारे लोग दर्शन पे बात कर रहे हैं। But is Krishna manifesting there लेकिन क्या कृष्णा वहाँ प्रकट हो रहे हैं? so that you can have undeniable spiritual experience, ताकि आपको अविश्वसनीय आध्यात्मिक अनुभव of मिले, really food for the soul? कि असल में आपका आत्मा का भोजन हो। Otherwise, it's all theoretical, वरना ये सब केवल it's मौखिक all होगा, materialistic, भौतिक होगा, it's all sentimental. भावुक होगा, It's not the real, it's not factual. असली और तत्व में नहीं होगा। Theoretical jnana means not the real. मौखिक ज्ञान यानी कि वो असली नहीं होता। And those who are doing for this jnana, it says jnanis are the greatest cheaters जो लोग ज्ञान के लिए करेगा, ज्ञानी सबसे बड़े ठग हैं, because they're running after name and fame. क्योंकि वो नाम और प्रतिष्ठा के पीछे जा रहे हैं। Everybody wants to be seen as intelligent man सभी दिखना चाहते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान and very हैं, pious, बहुत पुण्यवान हैं, right? And everybody wants to be the guru, और सभी गुरु बनना चाहते हैं। right? Everybody wants to instruct somebody else. सभी कोई किसी दूसरे को निर्देश देना चाहते हैं। Everybody trying to establish themselves. सभी खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रहे How हैं। bright we are, कितने how बुद्धिमान, intelligent we are, कितने चतुर हैं, how much we know, कितना ज्यादा हम जानते हैं, and we're ready to instruct the whole world और हम पूरे दुनिया को निर्देश देने or के लिए तैयार whoever हैं। will listen, और जिसके जो भी हमसे सुनेगा, and we don't even know what to do, और हमें खुद नहीं पता है क्या करना है। right? We're groping in the dark, हम खुद अंधकार में भटक रहे हैं, completely on mental, sentimental पूरी तरह level, से मानसिक और भावुक स्तर पे हैं। listening to the stupid mind controlled by Maya, अपने बेवकूफ मन को सुनते रहते हैं जो माया and के just लिए हैं, making plans, और मन में योजना बनाते रहते हैं, and we're not even asking whose plan is it. और हम पूछ भी नहीं रहे ये योजना है किसकी। Is it Krishna's plan or is it Maya's क्या ये plan? कृष्णा की योजना है या माया की योजना है? We cannot even say, हम बोल भी नहीं पा रहे। which means Maya's plan. इसका मतलब निश्चित If ही you माया की cannot say योजना it है। means Maya's अगर plan. आप बोल नहीं पा रहे इसका मतलब माया की If योजना है। Krishna convinces you, then you say it's Krishna's अगर plan. कृष्णा ने आपको आश्वस्त कर दिया है तो आप कहेंगे He ये told कृष्णा की योजना है। inside, he told through the वो Guru. उन्होंने अंदर से बोला और गुरु के माध्यम It's से quoted बोला। according to Guru Sadhu और Shastra. गुरु साधु शास्त्र के It's आधार पर scientific. पूरा The वैज्ञानिक है experience is और undeniable. अनुभव It's अविश्वसनीय है। food for the soul. आत्मा को भोजन मिल रहा Purifying है, the चेतना को consciousness. शुद्ध कर रहा है, Answering the questions. प्रश्न का उत्तर दे रहा है, Destroying the doubts. संदेहों को नष्ट कर रहा है, Becoming crystal clear. और शीशे की तरह साफ हो गया। Krishna's instruction means crystal clear instruction. कृष्णा का निर्देश मतलब शीशे की तरह साफ निर्देश। Other day we read Prabhupada and the Prabhupada is saying you must find out what is Krishna's instruction for you. दूसरे दिन हम पढ़ रहे थे, प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे थे आपको निश्चित ही ढूंढना होगा कृष्णा का And क्या then निर्देश act है, again on Krishna's instruction. और आपको कृष्णा के निर्देश के आधार पर कार्य करना होगा। So are we thinking and acting on Krishna's instruction? क्या हम सोच रहे हैं और कृष्णा के निर्देश के Are आधार we पर कार्य कर रहे हैं? 100% convinced about that? क्या हम 100% सुनिश्चित हैं इस बात Is के it लिए? crystal क्या clear? शीशे की तरह साफ है हमारे लिए? If it's not crystal clear, if you're not 100% convinced, that means you're on mental platform. अगर आप शीशे की तरह आपके सामने साफ नहीं है, 100% आप सुनिश्चित नहीं है, तो यानी कि आप Whatever मानसिक your स्तर mind पर, is thinking, जो भी आपका मन सोच रहा है, whatever, however you're feeling, जैसा आपको अनुभव हो रहा है, oh, I'm feeling my emotions, my feelings, right? और We're मेरी all sentimental. ये मेरी भावना है, मुझे अनुभव है, And ये in सब this भावुक day बातें and हैं। age, they're training like that. और इसी वर्तमान युग में How इसी do तरह you का शिक्षण दिया जा feel? रहा है। कैसा आप महसूस कर रहे हैं? You know, how's your emotional state today? आज का आपका भावुक स्तर कैसा Are है? you feeling triggered and disturbed by this conversation? क्या आपको ये बातचीत से थोड़ी परेशानी लग रही है? Right? Everyone should be heard. सभी की बातें सुननी चाहिए। Right? It's like
It's like Pariksha Maharaj is trying to leave his body in the best way possible, right? And like everybody shows up and he's like, look, I only got 7 days, you know what I mean? I don't need everybody's opinion. जैसे परीक्षित महाराज के 7 दिन बाकी थे मृत्यु के, तो इतने सारे ऋषि मुनि वहाँ पहुँचे, तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं इतने सारे लोगों का मुझे सुझाव नहीं सुनना है, मुझे जानना है मेरे 7 दिन बस बाकी है मृत्यु के। But it's funny, like everyone's like, let's all sit in a circle. बहुत मजाकिया हुआ, सभी लोग जो है घेरा बना के बैठेंगे। Let's hear everybody what's in their mind, in their heart, in their emotions. सबके मन में, सबकी भावनाओं में, हृदय में क्या बातें हैं, चलो सबकी बात सुनते हैं। And then everyone just wants to be heard. और सभी चाहते हैं बस उसको सुना जाए। And we're just like spewing all of this complete nonsense mental speculation. और सभी लोग अपना पूरा फालतू मनोधर्म बाहर निकालेंगे। And it's like, is there anything else? Oh, let me check my feelings and emotions. Yeah, I feel emotionally all right. Today I'm all right. और सभी की भावनाएं कैसी हैं, सभी हम चेक करते हैं और वो आज मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मेरी भावनाएं बहुत अच्छी लग रही है। Let's go to the next condition soul. You know, what's on your mind? You know? चलिए अगले पद जीव के पास जाते हैं, उनके मन में क्या बातें हैं? How are you feeling today? आपको कैसा महसूस हो रहा है? What's your mind telling everybody that we need to hear what your mind is telling you? आपका मन आपको क्या बता रहा है जो हम सभी को सुनने की जरूरत है? What's the good advice you're getting today? आज आपको कौन सी अच्छा सलाह मिल रही है? What's the good intelligence guiding you today? आज से कौन अच्छी बुद्धि आपको मार्गदर्शन कर रही है? Let's hear that. चलिए इसको सुनते हैं। And how you feeling? कैसा महसूस हो रहा है आपको? How's your emotional state today? आपका भावुक स्तर Are you कैसा है? feeling comfortable? क्या आपको सुविधा आरामदायक लग रहा है? And you just go around to all the conditioned souls. और एक एक बद्ध जीव के पास जाएंगे And everyone just tells whatever their mad mind is telling. और सब वो कहेंगे जो उनका पागल मन उनको बता रहा And है whatever their agitated senses and emotions are, you know, promoting. और जो उनकी विचलित मन और इंद्रियां जो आगे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं And that's going to purify the universe, और ये पूरे right? ब्रह्मांड को शुद्ध करेगा And we're all going to get liberated by that satsanga. और उस सत्संग से हम सब मुक्त हो जाएंगे। Is that your idea? क्या आपका ये विचार है? So Mahaprabhu, he's made it so simple, there's nothing to think about. महाप्रभु ने इतना सरल बनाया है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत There's नहीं nothing है, to speculate about. कुछ भी मनोधर्म करने की जरूरत नहीं है, It's that simple. इतना सरल है। My Guru said it's so simple you might just miss मेरे it. गुरुदेव कहा करते थे इतना सरल है ये आप हो सकता है Because we चूक think, oh, जाएंगे it has to be so complicated. क्योंकि हम सोचते हैं इतना जटिल होना चाहिए, Four-dimensional information. ये चतुर्थ आयाम की You जानकारियां हैं, have to just keep speculating endlessly. आपको बस निरंतर मनोधर्म करते Use रहना होगा your really shallow intelligence. I mean your intelligence, और आपकी छोटी बुद्धि या मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करना है आपको, which can't even figure out materially what to do. जो भौतिक रूप से पता नहीं लगा पा रहा है क्या And then you're going to try to understand what's happening in Vaikuntha. और आप समझने का प्रयास कर रहे हैं वैकुंठ में Because क्या you होगा, were from that place. क्योंकि आप उस जगह से आए हैं। So just try to remember when you were back home. तो उसको याद करने का प्रयास कीजिए जब अपने घर पे थे। I'm not remembering. मुझे याद नहीं आ रहा, We don't even remember what happened this morning. हमें ये भी नहीं याद सुबह क्या हुआ था, What to speak of what's happening in Goloka Vrindavan. तो गोलोक वृंदावन में क्या हो रहा था वो क्या पता Do चलेगा? you remember what's happening in Goloka Vrindavan? क्या आपको याद है गोलोक वृंदावन में क्या हो रहा था? My friend, you don't remember? मेरे मित्र आपको याद नहीं है? You don't remember? आपको याद नहीं है? Were you ever there before? आप पहले थे कभी वहाँ? You sort of remember something, no? कुछ याद आ रहा है आपको? थोड़ा बहुत? We have a lot of forgetfulness, I guess, huh? हम कुछ ज़्यादा ही भूल चुके हैं लगता है। So the program's already been figured out. तो कार्यक्रम पहले ही निर्धारित है, It's not my ये program. कार्यक्रम मेरा नहीं है, It's Sri Chaitanya Mahaprabhu's program. ये श्री चैतन्य महाप्रभु का कार्यक्रम I'm है। not trying to give you my program. मैं अपना कार्यक्रम नहीं देने वाला हूँ, I'm just trying to repeat what is Mahaprabhu's मैं program. वो दोहराने का प्रयास करूंगा कि महाप्रभु का क्या कार्यक्रम है। Sit with sincere devotees who somehow or other want to purify their heart and their consciousness, एक निष्ठ भक्तों के साथ बैठ के जो किसी भी तरह से अपने हृदय और चेतना को शुद्ध करना चाहते and they want to find some peace and happiness in life, practicing a spiritual life, हैं और वो अपने आध्यात्मिक जीवन में अभ्यास करते हुए कुछ शांति और सुख देखना चाहते want to हैं, get free from the disturbance of uncontrolled mind and senses, अनियंत्रित मन की परेशानियों से अब बच के मुक्त who होना are चाहते हैं, materially fed up, जो भौतिक रूप से पूरी तरह थक चुके हैं, lost faith in materialism, भौतिकतावाद श्रद्धाओं के नष्ट हो exhausted चुके by the हैं, whole thing, सभी चीजों से थक चुके हैं
disappointed, निराश हो चुके हैं and feeling powerless and और hopeless, पूरा आशाहीन और शक्तिहीन then महसूस this कर is रहे a हैं, perfect place for you. तो ये सबसे अच्छी जगह है आपके लिए। You found your home. आपका घर आपको मिल गया। So now let's just focus on what is the तो solution. चलिए अब हम ध्यान लगाते हैं कि समाधान क्या है। So the solution is Shravanam, Kirtanam, Vishnu तो Smaranam. समाधान है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। Shravanam first, most important aspect of devotional life. श्रवणम भक्ति का सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण भाग है। Because without nice Shravanam and the benefits and effects of that Shravanam, there is no nice Kirtan. क्योंकि अच्छा श्रवण और उसका श्रवण का अच्छा प्रभाव नहीं देखने पे कोई We अच्छा cannot कीर्तन नहीं हो chant सकता। properly Hare Krishna ना तो Mahamantra, हरे कृष्ण महामंत्र सही तरीके से हम नाम neither ले can we सकते हैं, speak Hari-katha Krishna-katha with any potency or scientific presentation. और ना ही हम हरि कथा कृष्ण कथा बोल सकते हैं पूरी शक्ति के साथ वैज्ञानिक प्रस्तुति के साथ। That everyone's just thinking their speculation is coming from God. Their so-called intelligence and their twisting of manufacturing of everything is all because they're so intelligent. It's coming from Krishna. सभी लोग सोचते हैं कि जो बुद्धि में आ रहा है, मन में आ रहा है, मनोधर्म में जो आ रहा है, ये सब कृष्णा से आ रहा है। And Prabhupada said, if you want to give me any credit, you can give me one credit. प्रभुपाद ने कहा अगर आप मुझे कोई श्रेय देना चाहते हैं तो मुझे एक श्रेय दीजिए। That what I received from my spiritual master, I presenting to you perfectly, not adding or subtracting anything. जो मैंने अपने गुरु से सुना उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ना तो कुछ जोड़े ना घटाए यथारूप। And because I didn't manufacture anything, और मैंने कोई निर्माण नहीं किया, I didn't concoct anything, और मैंने कुछ I बनावट नहीं didn't की, twist anything, मैंने कुछ तोड़ा I नहीं, presented Krishna's words as it is. मैंने कृष्णा की बातों को यथारूप में प्रस्तुत Krishna, किया। God is quite capable of expressing himself as it is. कृष्णा भगवान इतने योग्य हैं अपने आप को यथारूप में He प्रस्तुत doesn't करने need के लिए। some, materialistic, confused people interpreting his words. उसको कोई भौतिक भ्रमित व्यक्ति नहीं चाहिए उनके शब्दों को तोड़ने मरोड़ के पेश करने के So लिए। Prabhupada said, purity is the force. प्रभुपाद कहते हैं शुद्धता में बल है, So because Prabhupada's pure devotee, Shuddha क्योंकि Bhakta, प्रभुपाद शुद्ध भक्त है and he's presenting Krishna's words without adding or subtracting और वो anything. कृष्णा की बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं बिना कुछ जोड़े घटाए। My Gurudev used to say, I'm just a mere pipe. मेरे गुरुदेव कहा करते थे मैं तो एक केवल पाइप हूँ, There's a reservoir of water. एक पानी का भंडार है It's coming from one pipe जो ये एक पाइप से आ रहा है and going out other और pipe. दूसरी पाइप से बाहर निकल रहा है। The pipe never thinks, oh, I'm the reservoir. पाइप कभी ये नहीं सोचता कि मैं ही जल का भंडार हूँ, I'm just a mere pipe. कहते हैं मैं तो एक केवल पाइप हूँ। So what I'm hearing, what I heard, then that same thing I'm presenting to you तो जो मैंने सुना, जो मैंने साक्षात्कार किया, वही आपको यथारूप में मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, as it is, यथारूप में, not adding, not ना subtracting, जोड़े ना घटाए, giving all credit and praise to Krishna and Mahaprabhu and their parampara, सारा श्रेय सारा महिमा महाप्रभु के परंपरा उनके भक्तों को because देना। otherwise we'd have no idea what is this तो information. ना इसके बिना हमारे पास कोई जानकारी नहीं होगी इसकी, It's only because of their ये mercy केवल उनकी कृपा से है, we can understand हम something, कुछ समझ पा रहे हैं and that's something we're presenting as it is. और वो कुछ हम यथारूप में प्रस्तुत कर पा And रहे if we do that sincerely in our hearing and हैं। chanting, और अगर हम अपनी एक निष्ठता से उसमें श्रवण और कीर्तन में ये and करेंगे somehow or other Krishna Mahaprabhu and the devotees are pleased with our small effort, और किस तरह से कृष्णा महाप्रभु उनके भक्त हमारे छोटे प्रयास से खुश हो and the पाएंगे speaker is sincere and serious, और प्रवक्ता अगर एक निष्ठ है गंभीर the है hearer is sincere and serious, they want to solve their और problem, श्रवणकर्ता भी गंभीर है एक निष्ठ अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं then Krishna may empower those words to affect us. तो कृष्णा उन शब्दों में सशक्तिकरण डाल सकते हैं हमारे ऊपर कुछ So प्रभाव this डालने के लिए। process of Shravanam, especially hearing, is first and most important aspect of bhakti. तो ये श्रवणम की प्रक्रिया ये सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण भाग है भक्ति। Srila Prabhupada says the path of bhakti is the path of hearing. श्रील प्रभुपाद बताते हैं भक्ति का पथ श्रवण का पथ है। Prabhupada says if you hear very, very nicely, then you can speak very, very nicely. प्रभुपाद बताते हैं अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे से बोल You पाएंगे। see, if someone doesn't hear and understand something, what is there speaking about that topic? तो अगर कोई अच्छे से सुनता नहीं समझता नहीं है तो उस विषय के बारे में क्या बात कर पाएगा? They're just talking, but it's not clear. तो वो बोलते हैं लेकिन कुछ भी साफ नहीं होता। Many details are left out of there, बहुत सी जानकारियां वहाँ and much of speculation is thrown in there. और बहुत सारा मनोधर्म उसमें Because छोड़ा they're trying हुआ to है fill up the space. क्योंकि वो खाली जगह को भरने का प्रयास कर So रहे हैं। all of those words are not coming from वो Krishna. सारे शब्द कृष्णा से नहीं आ रहे हैं। So the message is very confusing. तो संदेश बहुत ही भटकाने वाला होता है।
That will not satisfy your ear or your heart. आपके कानों और आपके हृदय को संतुष्ट नहीं It कर says if पाएगा। we hear from Krishna, food for the soul, your ear will be satisfied with that discussion, and also your heart will be satisfied. अगर आप कहते हैं कृष्णा को सुन पाएंगे अपने कानों से, तो आपका हृदय, आपका कान दोनों संतुष्ट हो Why जाएंगे। heart? Because Krishna is there within the heart. और हृदय क्यों? क्योंकि कृष्ण हृदय में मौजूद है। Right? Krishna said, I am the super soul, Paramatma, Chaitu Guru, in the heart of every living entity. कृष्ण कहते हैं मैं हूँ परमात्मा, सभी जीवात्माओं के हृदय में स्थित हूँ। So if he sees we're sincerely hearing and chanting about him, trying to glorify him, अगर वो देख रहे हैं कि हम उनको एकनिष्ठता से, गंभीरता से उनके बारे and में he's श्रवण happy करते with our sincere hearing and हैं chanting, और हमारे एकनिष्ठ प्रयास से वो खुश हैं, if he's satisfied in the heart, we'll be satisfied in the heart. अगर वो हृदय में संतुष्ट है, हम भी हृदय में संतुष्ट होंगे। And if we're satisfied on the soul platform, you'll be satisfied on the mental platform, on the intellectual platform, every platform. आत्मा के स्तर में संतुष्ट है तो मानसिक स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, हर एक स्तर पे आप संतुष्ट होंगे। This is the only thing needed. यही एकमात्र It's the जरूरत है, only solution. यही एकमात्र There's समाधान no है other way out. और कोई बाहर निकलने का तरीका नहीं है। Simplified program, सरल कार्यक्रम, only solution, in एकमात्र especially Kali Yuga. विशेष करके कलयुग में It's like a one-time opportunity. ये एक ही बार मिलने वाला मौका है। Right? It's someone selling some amazing thing. This okay. This is a one-time offer for you. अगर कोई बहुत बढ़िया चीज बेच रहा और कहेगा एक ही बार का ऑफर है ये, It's only for a short period of time. बहुत कम समय के लिए है, We don't normally give this offer to everybody. ये ऑफर हमेशा सभी को नहीं मिलता है। So if you're very fortunate and you understand and you take advantage of it, तो आप बहुत भाग्यवान हैं, आप इसको समझिए, आप इसका लाभ then उठाने you का can प्रयास get कीजिए that benefit. और आपको ये लाभ मिलेगा। So who can hear तो it? कौन इसको सुन Who सकता है, can understand the opportunity? कौन इस मौके को समझ सकता है And who can seriously take advantage of that और कौन गंभीरता opportunity? से इस मौके का लाभ उठा सकता है, That's the only difference. यही एकमात्र So it's अंतर है। being offered to one and all. तो ये सभी के सामने प्रस्तुत किया So गया है। who can hear तो it? कौन इसको सुन सकता है, They can be benefited. उनको लाभ मिलेगा। They say, okay, whatever, I have to go for that. तो कहते हैं जो भी हो मुझे यही पाना है। Now the problem is because we're so much materially attached लेकिन समस्या ये है बहुत ज्यादा भौतिक this आसक्त है body, इस शरीर से, to these bodily शरीर relations, के संबंधों से, to all of this I, me, and mine, मैं, मुझे, मेरा, to all of this selfishness and extended तो ये selfishness, सारा स्वार्थ, विस्तृत स्वार्थ, right? This is very, very thick ropes and deep anchors in the mud. तो ये बहुत मोटी मोटी रस्सियां और मोटे लंगर कीचड़ में फंसे So हुए we हैं। cannot hear this opportunity तो हम इस मौके को सुन because नहीं the पा रहे हैं। mind is stolen by illusion मन को मोह ने चुरा लिया है and we're distracted only by that. और हम उसी से भटके हुए हैं। So what chanting are you going to do? तो क्या आप कीर्तन करने वाले हैं? What philosophy are you going to understand? कौन सा सिद्धांत समझने So वाले the हैं? only chance to get free from that is to do this Shravanam properly in the right association. एक ही मात्र मौका है समाधान की सही तरीके से श्रवण करें सही संग में। And pray to Gauranitai, please, somehow or other, let this katha enter into my ear. और गौर निताई से प्रार्थना करना किसी भी तरीके से ये कथा मेरे कानों के So अंदर we घुसने are दीजिए, not so distracted. ताकि हम इतना भटके ना रहें। This katha, Hari-katha Krishna-katha, is a medicine. ये हरि कथा कृष्ण कथा एक दवा है। Am I being too strong? क्या मैं ज्यादा शक्तिशाली Are होकर your बात कर रहा हूँ? feelings upset? Are you upset with me? क्या आप लोगों को मुझसे बुरा Are लग your रहा है? emotions, are you comfortable? क्या आपकी भावनाएं ठीक हैं, आरामदायक लग रहा Are है? you feeling all right? आपको ठीक ठाक महसूस हो रहा है? Don't you want to hear like a strong message? क्या आप कुछ मजबूत Right? You want to शक्तिशाली hear संदेश like, सुनाने चाहते हैं? I hope it's like this. आप सुना I think it's like ऐसा, that. मुझे उम्मीद है ऐसा होना चाहिए, ऐसा विचार है What do मेरा। you think about it? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? Is that's convincing? क्या ये आश्वस्त कर पाएगा आपको? So if Krishna wants to convince you, can he not convince you? क्या अगर कृष्ण आपको आश्वस्त करना चाहते हैं तो क्या So आपको why आश्वस्त we're नहीं कर not सकते? convinced? तो क्यों हम आश्वस्त नहीं? Because we're not hearing from क्योंकि हम Krishna. कृष्ण से सुन नहीं And रहे, because we're not hearing, we have a hearing और problem. क्योंकि हम सुन नहीं रहे इसका मतलब हमारे सुनने We're में hearing समस्या है। from Maya हम माया से सुन रहे हैं, instead of Krishna. कृष्ण को छोड़कर। That's why we're weak, इसलिए हम we're कमजोर हैं, stupid, बेवकूफ हैं, we're hesitating, हिचक रहे हैं, we're doubtful, संदेह कर we're रहे हैं, lazy, आलसी we're हैं, foolish, मूर्ख हैं, and we're missing और opportunity. हम मौके को छोड़ रहे हैं। Because Krishna says, because of your false ego, you cannot hear me. कृष्ण बता रहे अपने मिथ्या अहंकार से तुम मुझे सुन नहीं And पा रहे हो, because you cannot hear me, you're और तुम lost. मुझे सुन नहीं पा रहे हो, तुम भटक गए हो, And you don't even know you're lost. तुमको पता भी नहीं है तुम भटके That's हो, how lost you are. इतने भटके हुए हो। No, I don't feel lost. नहीं, मुझे तो नहीं लगता मैं भटका हूँ। My Guru said, you're deaf, dumb, and मेरे blind. गुरुदेव कहते तुम अंधे गूंगे बहरे I हो, don't feel deaf, dumb, and blind. मुझे महसूस नहीं हो रहा मैं I अंधा can गूंगा see बहरा। you. मैं आपको देख सकता I हूँ, can hear you talking some big talk here. मैं सुन पा रहा हूँ, कुछ बड़ी बड़ी बात कर रहे I'm हैं। not the dumb. I know. I'm intelligent.
person. मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। Right? How do you say? कैसे आप बोल सकते हैं? And then we get defensive. Oh, you think you know? और फिर उसके बाद हम अपराध करने लगते हैं, कहते हैं आप सोचते हैं You're आप the only जानते one हैं, who knows about Yuga Dharma? आप जानते हैं युग धर्म के बारे में, You're the only preacher? आप ही एकमात्र प्रचारक हैं। We're preaching. हम भी प्रचार करते हैं, We have our people. We tell them about Krishna. हमारे पास भी लोग हैं, हम कृष्णा के बारे में बताते हैं। My Gurudev, when they meet everybody, he said, "Do you know Krishna? Can you hear Krishna? Can you see Krishna?" मेरे गुरुदेव जो लोगों से मिलते कहते हैं, आप कृष्णा को जानते हैं, कृष्णा को देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। They don't say anything. कुछ बोल नहीं पाते हैं फिर। And then otherwise, if it's theoretical, the words has no shakti, no potency. अगर ये केवल मौखिक होता है, उन शब्दों में कोई शक्ति नहीं होती। It's just some clever talking, you know. बस चालाकी से बातचीत करते हैं। Maybe. वो भी A हो lot सकता of it's not clever at all. है। बहुत सारा तो चालाकी भी नहीं A है। lot of it's a foolishness. बहुत सारा तो बेवकूफी है। Oh, Hanuman! The yogis in the sky! योगी हवा में है। Our yogis in the और sky! एक योगी हवा में है। What's happening here? क्या हो रहा है यहाँ? We don't even know. Whoa. कोई पता नहीं। That's some transcendental stuff right there. कुछ दिव्य चीजें हो रही है। So we are overthinking it. जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। It's a simple, straightforward plan. बहुत सरल सीधा रास्ता For है। those who really want to understand and solve the problem. जो असल में समस्या को समझना चाहते हैं, समाधान These करना चाहते हैं। instructions for people who want to become liberated. ये निर्देश उन लोगों के लिए जो लोग मुक्त होना चाहते हैं। If you don't want to be liberated, this information not meant for you. अगर आप मुक्त नहीं होना चाहते हैं, ये जानकारी आपके लिए नहीं है। Right? Only the stool is meant for us. फिर हमारे लिए केवल विष्ठा है। Like Gurudev, you silly. You're just like a two-legged animal. मेरे गुरुदेव कहा कि तुम दो पैरों पे चलने वाले जानवर हो। Only difference, no horns and no tail. एक ही अंतर है, दो सिंग नहीं है और एक पूंछ नहीं है। But mentality the same. लेकिन मानसिकता एकदम वैसा ही। Right? This is meant for people in human ये consciousness उन लोगों के लिए जो मनुष्य की who चेतना में है, realize their जो suffering, समझ पा रहे हैं उनके जीवन के दुख, realize they get a serious problem समझ पा रहे हैं उनकी बहुत गंभीर with समस्या है, uncontrolled mind and senses, अनियंत्रित मन और इंद्रियां हैं, forcing us into sinful activities जो हमें मजबूर कर रहे हैं पाप and करवाने के getting लिए। heavy lashes from the sinful और reactions. भारी भारी हमें प्रतिक्रिया झेलनी पड़ रही है हमारे पाप कर्मों No के कारण, belief, और कोई शांत राहत no नहीं मिल रही, solution, कोई समाधान नहीं मिल रहा, no material success, कोई भौतिक सफलता no नहीं मिल रही, spiritual कोई success. आध्यात्मिक सफलता नहीं। This is the only game in town. यही एक खेल यहाँ चल रहा है। Very simple. बहुत सरल है। Even you don't have to think about it. यहाँ तक कि आपको सोचने की भी जरूरत नहीं। Right? Sometimes they make instructions like so simple that even the stupidest person in the world can understand how to put that thing together. कभी-कभी चीजें इतनी सरल बनाई जाती है, दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी पता लगा लेगा कि कैसे इसको एक साथ किया जा सकता है, समझा जा सकता है। Right? What is it? What do they call it for dummies? Right? Right? This is bhakti for the dummies. तो ये भक्ति जो है जो पुतलों के लिए है। Yeah. Mahaprabhu has made it so simple. महाप्रभु ने इसे इतना सरल बनाया है। We're the dummies. और हम पुतलों की तरह हैं। Deaf, dumb, and blind. अंधे, गूंगे, बहरे। Big mental speculators. बहुत बड़े मनोधर्मी हैं। Is it? ऐसा है या नहीं? Am I too heavy? क्या मैं ज्यादा भारी बातें कर Do रहा you हूँ? feel offended? आप लोगों को बुरा लग रहा है? Is your emotional state too disturbed right now? क्या आपकी भावनाएं थोड़ी परेशान हो रही हैं? Huh? ऐसा है? That means I have to preach heavier. तो मतलब और भारी प्रचार करना होगा मुझे। That means it's not working. यानी कि काम नहीं हो रहा कुछ। You have to penetrate it. इसको अंदर You चीरना gotta होगा। crack the coconut नारियल को तोड़ना होगा। like a coconut. ये नारियल है। So we have a very nice. We've been reading in the Srimad Bhagavatam 3rd canto. तो श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद में हम पढ़ रहे थे। Vidura talks with Maitreya, विदुर मैत्रेय से बात कर रहे हैं। and a couple verses later, after the verse where it was talking about meditating on the Lord's lotus feet, और कुछ श्लोकों के बाद में जहाँ हम भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाने की बात कर रहे थे, within the heart, अपने हृदय में, and at the same time hearing about और Krishna. साथ ही साथ कृष्णा के बारे में सुनना। Right? So this is the best
possible way to become तो advanced. ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है भक्ति में प्रगति करने And we का। quoted Krishna telling Uddhava, there's no better way how to become enlightened, how to become advanced in your spiritual और हम life. बता रहे थे कैसे कृष्णा उद्धव को बता रहे हैं इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का। Meditate upon the lotus feet of the Lord within your heart. भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाना अपने हृदय Krishna में। says, I am that super soul situated within your heart. कृष्ण बताते हैं मैं हूँ वो परमात्मा जो सभी के जीवों में हृदय From में। me comes intelligence, remembrance, and all faith is coming from that Krishna in the heart. मुझसे सारी ज्ञान बुद्धि स्मरण शक्ति आती है। So we're like, I'm trying to figure everything out. और हम कह रहे हैं मैं सब पता लगाऊंगा। And we're never asking the source of all knowledge and intelligence. Can you please help me to understand this thing? और सारे ज्ञान और बुद्धि के स्रोत को हम पूछ नहीं रहे क्या आप मेरी मदद कर सकते We're हैं just चीजों को running समझने के लिए? around. Right? The hair, our seeker's on fire, running around. हम भागाभागी कर रहे हैं हमारी सिक्का में आग लग चुकी है। Right? I'm trying to figure everything out. सब कुछ पता लगाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। I just want to try to understand like what Krishna wants me to do. तो मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कृष्ण मुझसे क्या चाहते I हैं। don't know if it's this or this or that. मुझे पता नहीं ये I क्या don't know है। if it's here or there. मुझे पता नहीं यहाँ है वहाँ। And then I asked him, well, did you ask Krishna? और फिर मैं इनको पूछता हूँ कि आपने कृष्णा से पूछा? The devotees are like, no. तो कहते हैं नहीं। So you're going to figure out what Krishna wants you to do without asking Krishna what he wants you to do? तो आप ये पता लगाएंगे कृष्णा आपसे क्या चाहते हैं कृष्णा को पूछे बिना कि वो आपसे क्या चाहते हैं। Why will he tell you? क्यों वो आपको बताएंगे? Isn't it up to Krishna to tell you what he wants you to do? You're not going to ask him and you're going to just somehow pull this out of his, his intelligence, what he wants you to do? तो आप कृष्णा You have that power? कृष्णा को पूछेंगे नहीं वो आपसे क्या चाहते हैं और कृष्णा की दिमाग से वो बात आप बाहर निकालेंगे। आपके पास इतनी शक्ति है कि आप कृष्णा के दिमाग से वो बात बाहर निकाल लें। Just by the power of your mental speculation and your intellect? आपके मन की शक्ति से आपकी बुद्धि से आप ये बात बाहर निकाल लेंगे I'm कृष्ण। trying to figure out what Krishna wants me to do. मैं ये पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ कृष्णा मुझसे क्या चाहते हैं। But we don't want to ask Krishna. लेकिन हम कृष्णा को पूछना नहीं चाहते। And even if we ask Krishna, we can even hear Krishna. और यहाँ तक कि हम कृष्णा को पूछ भी रहे हैं हम कृष्णा को सुन नहीं सकते। That's why we're not asking. इसलिए हम पूछ भी नहीं रहे Because we can't hear. क्योंकि हम सुन Why नहीं should I सकते। ask if I can't hear? क्यों मैं पूछूं अगर मैं सुन ही नहीं सकता? So we have a hearing तो problem. हमारे सुनने में समस्या है। And then anyway, we just speculate, well, what do I think Krishna wants me to do? और फिर भी हम मनोधर्म करेंगे। मैं क्या सोचता हूँ कृष्णा Maybe मुझसे क्या this, चाहते हैं? हो maybe सकता है that, ये, हो सकता है maybe वो, here, हो सकता है maybe यहाँ, there, हो सकता है maybe वहाँ, yes, हो सकता है maybe हाँ, no, हो सकता है नहीं, maybe married, हो सकता है शादी maybe करना है, not. हो सकता है नहीं करना है, maybe live in India, हो सकता है भारत में maybe रहना not live in है, हो सकता है India. भारत में नहीं रहना है। On and on and on speculation. बस ये मनोधर्म चलता ही रहता है। So Prabhupada said 99% of the time, 99% of the people, all they know is their body and their mind. प्रभुपाद बताते हैं 99% लोग 99% समय केवल अपने शरीर और अपने मन को जानते हैं। You say, okay, how does my body feel? कैसा मेरा शरीर कैसा Is महसूस it कर रहा है? comfortable? क्या आरामदायक लग रहा Okay, है? it's reasonably comfortable. ठीक है, अच्छा आराम लग रहा है। Okay, not too hot, not too ठीक cold. है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंडी नहीं है। Okay. ठीक है। So, okay, how does my mind feel? अब मेरा मन कैसा महसूस कर रहा है? Are you disturbed? क्या तुम परेशान हो? Are you feeling alright? तुम्हें अच्छा लग रहा A है? little agitated? थोड़ा विचलित हो? We're just so tuned in, isn't it? पूरा ट्यून लगे। How's your emotions? How does my emotional state feel? फिर देखते हो मेरी भावनाएं कैसा महसूस कर रही How है? am I feeling? कैसा मुझे महसूस हो रहा है? We're just totally tuned in to what our mind is thinking and what our body and emotions are feeling, हम isn't it? पूरी तरह ट्यून रहते हैं मेरा शरीर और मेरा मन कैसा महसूस कर रहा है। And meanwhile, Krishna is just sitting there like waiting और और कृष्णा उसी तरह बैठे हुए हैं बस इंतजार कर रहे हैं as we're trying to figure out our mental and emotional and bodily platform. कि हम अपने मानसिक और शारीरिक स्तर में भटकने का प्रयास कर रहे हैं। Maybe I should move it over here. हो सकता है मुझे इधर थोड़ा जाना चाहिए या उधर जाना चाहिए थोड़ा। It's like moving the furniture. Where does it look best in the room? जैसे घर में फर्नीचर को लेकर जाते हैं कहाँ कमरे में ये अच्छा लगेगा देखने में। Hare Krishna. I decided to come with the topic today because I was afraid to ask if anyone had a question. मैंने सोचा आज मैं खुद कुछ विषय तैयार करके आता हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा था किसी को मैं सब पूछूंगा किसी को कोई सवाल है क्या। I learned my lesson. मैंने अपना पाठ सीख लिया है। So instead of letting the conditioned soul just say what's in their mind, better you just put something positive in their mind. You know what I mean?
बद्ध जीवों को उनके मन में क्या है, उनके बोलने देने से पहले उनके मन में कुछ सकारात्मक चीज डालिए। Let me put something positive in your mind, then you say what you want to say. पहले मैं आपके मन में कुछ सकारात्मक चीजें डालता हूँ, उसके बाद आप कुछ बोलिए। So in this verse in 3rd canto, chapter 5, Vidura talks with Maitreya. तो तृतीय स्कंद अध्याय 5 में विदुर मैत्रेय से बात कर रहे हैं। In the text 44, और श्लोक संख्या 44। Gantaraj Srimad Bhagavatam. So here it's being explained by Maitreya on Krishna's instructions. तो यहाँ मैत्रेय कृष्णा के निर्देश बता रहे हैं That those who are too much materially engrossed, तो जो भौतिक रूप से बहुत ज्यादा लिप्त हैं, they're too much attached to their body and bodily relations. बहुत ज्यादा आसक्त है अपने शरीर से और शरीर के संबंधों And से। they're completely bound up with thoughts of I, me, and mine. वो पूरी तरह से विचारों से बने हैं, मैं, मुझे और मेरा। So all they know is their body and mind, bodily relations. तो केवल अपने जानते हैं शरीर को, मन को और शरीर से संबंधित लोगों को। They are unable to see your lotus feet within the heart. वो आपके चरण कमलों को अपने हृदय में नहीं देख सकते हैं। So although your lotus feet are situated within their bodies, still they're unable to understand or to see those lotus feet. यद्यपि आपके चरण कमल उनके शरीर के भीतर ही मौजूद हैं, लेकिन वो आपके चरण कमल को ना तो देख सकते हैं ना समझ सकते हैं। And in the purport, Srila Prabhupada is explaining और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे that हैं the whole Vedic philosophy is तो सारा वैदिक सिद्धांत है how does one get rid of this material engagement of the gross and subtle body? How do you get out of this situation? तो कैसे आप इस स्थूल या सूक्ष्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं, इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकल सकते हैं? Not how do you maintain it, ये नहीं इसको कैसे हम how do you increase it? पालन करें, कैसे It's इसको how और do you बढ़ाऊं? get out of it? ये तरीका कैसे How मैं do इससे you बाहर get निकलूं? free from it? कैसे मैं इससे मुक्त हूँ? That's what these instructions are for. ये सारे निर्देश It's इसके for लिए, those people. उन लोगों के लिए। So the whole Vedic purpose, philosophy of life, the Vedic culture is for this point. तो सारा वैदिक सिद्धांत, वैदिक जीवन इसी एक उद्देश्य के लिए है। How to get free from all of this material engagement. कैसे सारे भौतिक पिंजरे से हम बाहर You निकल know सकते what is engagement? हैं? like a cage। Yeah, inside the cage, right? The gross subtle body. तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के भीतर। Because that engagement in gross subtle body, one is only condemned to these miseries, life's miseries. इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर के पिंजरे में जीवन के कष्टों में वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। So this material body is the source of so much anxiety and so much suffering तो condition. ये भौतिक शरीर ही हमारे सारे दुखों का, सारी चिंताओं का कारण है। That's why we're all day long trying to somehow manage the body so that we don't have so much anxiety or disturbance or suffering on the bodily mental platform. इसलिए पूरे दिन हम अपने शरीर को किसी न किसी तरह से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं ताकि शरीर और मन के स्तर पे हमें कोई समस्या, कोई चिंताएं ना आए। We're spending the whole day just how to situate this body and mind to be as peaceful as possible. हम अपना पूरा दिन लगा रहे हैं कैसे अपने शरीर और मन को जितना As ज्यादा शांत happy में as बना के रखें, possible, जितना ज्यादा सुखी so बना we के don't रख have to सकें, be in a suffering, anxiety situation. ताकि हम दुख और चिंताओं वाली स्थिति में ना रहें। So how well is that going? तो कितना अच्छा जा रहा है? Everything solved nicely? सारा Are we समाधान all हो गया? peaceful, satisfied? क्या हम सभी शांत हैं, संतुष्ट हैं? So all of the suffering is coming because of this gross and subtle material body. ये सारे दुख आ रहे हैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कारण। And it's creating this desire to lord it over to enjoy the material nature. और यही कारण है हमारे अंदर भौतिक प्रकृति को भोग करने की इच्छा जाग रही है। Everything is I, me, and mine. सब कुछ मैं, मुझे और मेरा। Everyone is thinking I'm the Lord of all that I survey. सभी ये सोचते हैं मैं जो कुछ देख रहा हूँ इसका सब मैं So भोग in the करूँगा। center of the universe, instead of Krishna, it's us. तो ब्रह्मांड का केंद्र कृष्णा को छोड़ के हम खुद को बनाना So चाहते our हैं। world starts with us and then we look out. तो हमारी दुनिया शुरू होती है हमसे और उसके बाद हम बाहर देखना शुरू करते हैं। I am the Lord of all that I survey. जो कुछ मैं देख रहा हूँ इसका मैं स्वामी हूँ। So many things I possess, बहुत सारी चीजें मेरी संपत्ति and हैं I shall possess more और मैं और ज्यादा जमा and करूँगा more. और ज्यादा। Who can be richer than I am? मुझसे ज्यादा धनी कौन हो सकता है? Who can be more educated than I am? मुझसे ज्यादा शिक्षित कौन हो सकता I am the master. है? मैं हूँ मालिक, I am God. मैं भगवान हूँ। Who else is there but me? मेरे अलावा और कौन है? This is I, me, and mine mentality. ये मैं, मुझे और मेरा मानसिकता है। Does this get a little bit more? क्या ये और ज्यादा तेज हो सकता है?
all or nothing, right? या तो पूरा या कुछ भी नहीं होगा. So all of these different ideas, Prabhupada says, it reflects the philosophy of aham mama. तो प्रभुपाद बताते हैं ये सारे सिद्धांत दिखाते हैं अहम मम. The conception that I am everything. ये विचारधारा मैं सब कुछ हूँ. When you're thinking all day, aren't you just completely thinking about yourself the जब whole day? पूरे दिन क्या आप केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं? How do I feel? What am I thinking? What do I कैसा want to महसूस हो do? रहा है? मैं क्या सोच रहा हूँ? What क्या is my कर रहा हूँ? enjoyment? मेरा What is भोग my कहाँ? suffering? मेरा दुख क्या है? What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? Everything is just about I am everything. सब कुछ बस इसी पे लगा रहता है, मैं सब कुछ. Are you thinking like that? क्या आप ऐसा सोचते हैं? I am everything. मैं सब कुछ हूँ. So persons conducted by such conception of life, तो जो व्यक्ति जीवन के ऐसी विचारधारा से जीवन जीते हैं, they can never get liberation from material bondage. वो भौतिक बंधन से कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते. So if we're stuck in this I, me and mine, अगर हम इस मैं, मुझे और मेरा and मानसिकता I am everything, और मैं सब कुछ, they can never get liberated from the material bondage of gross and subtle body. वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बंधन से कभी मुक्ति नहीं पा सकते. But even a person who's perpetually condemned by this mentality, और जो व्यक्ति निरंतर इस मानसिकता से जूझ रहा है and forced to suffer the miseries of material existence as a result, और भौतिक अस्तित्व के कष्टों को परिणाम स्वरूप झेलता जा रहा है, even they can get relief उनको भी मुक्ति मिल सकती है from this bondage इस बंधन से, if they simply agree to hear only Krishna-katha. केवल अगर वो इतना सहमत हो जाते हैं मैं केवल कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ. So this is like the worst case scenario of the person in Kali Yuga, right? कलियुग के व्यक्ति की जो सबसे खराब व्यक्ति की जो परिस्थिति है, Not good intelligence, कोई अच्छी बुद्धि नहीं, lazy spiritually, आध्यात्मिक रूप से so आलसी much है, attached to family, to the body and family, bodily relations, इतने ज़्यादा आसक्त हैं शरीर से, परिवार से, शरीर के संबंधों से, hardly any interest or desire even to get out of material life or to get free from this bondage. और मुश्किल से भी कोई इच्छा है भौतिक जीवन या भौतिक बंधन से बाहर निकलने की. So Mahaprabhu has made it like so, like the last resort, even for the most condemned and disqualified person. तो महाप्रभु ने सबसे आखिरी तरीका निकाला सबसे ज़्यादा निंदनीय, सबसे ज़्यादा अयोग्य लोगों के लिए कलियुग के. If you just simply agree to hear only Krishna-katha, अगर आप केवल सहमत होते हैं कृष्ण कथा सुन पाने के लिए, in this age of Kali, that process of hearing this Krishna-katha और इस कलियुग में ये कृष्ण कथा श्रवण करने की प्रक्रिया is the most effective means of gaining release. ये सबसे प्रभावकारी तरीका है राहत पाने का. What about chanting? चैंटिंग के बारे में क्या? What about chanting? चैंटिंग के बारे में क्या? In this age of Kali, the process of hearing Krishna-katha is the most effective means of gaining release. इस कलियुग में ये श्रवण की प्रक्रिया कृष्ण कथा सबसे प्रभावकारी तरीका है राहत मुक्ति पाने का. From this unwanted family affection. ये गैर जरूरी पारिवारिक स्नेह के प्रति. This family affection is a disease. ये पारिवारिक स्नेह एक बीमारी है. It's a heart disease. ये हृदय की बीमारी है. Oh, I have my family affection. मेरे परिवार के प्रति बहुत स्नेह है. It's a poison. ये जहर है. It's a killer of your soul. ये आपकी आत्मा को हत्या कर रहा है. Well, I'm attached to my family. मैं अपने परिवार से आसक्त I'm हूँ. attached to killing my own soul. मैं बहुत आसक्त हूँ अपने परिवार का अपने आत्मा की हत्या करने से. So in this age of Kali, the process of hearing Krishna-katha is the most effective means of gaining release from this unwanted family affection. तो ये कलियुग में सबसे प्रभावकारी तरीका है कृष्ण के बारे में श्रवण करना, इस गैर जरूरी पारिवारिक स्नेह से मुक्ति पाने का. And thus finding permanent freedom in life. और जीवन में नित्य आजादी प्राप्त करने का. Now Prabhupada says it's natural to have some love and affection for your family. प्रभुपाद बताते हैं ये बहुत स्वाभाविक बात है अपने परिवार के प्रति कुछ स्नेह होना. But not so much that you forget
who you are and what is the real purpose of your life. लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप भूल जाएं आप कौन हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है. Not the fact that you give up Sanatan Dharma to run after, man-made Dharma, Kaitava इतना Dharma. नहीं कि आप सनातन धर्म को त्याग करके मानव निर्मित धर्म को पीछे Due to पालन कर this रहे हैं. bodily conception of life and over-attachment due to this family affection. इस शारीरिक स्तर के विचारधारा के कारण जरूरत से ज़्यादा स्नेह पारिवारिक आसक्तियों. We're eternal servants of Krishna. हम कृष्णा के नित्य दास हैं. That's the real identity of the soul. ये आत्मा का असल That परिचय. is the real permanent freedom in life. ये है जीवन की पूर्ण स्वाधीनता. Unwanted family affection. गैर जरूरी How do you पारिवारिक get स्नेह. free from it? कैसे आप इससे मुक्त हो Not सकते how do you increase हैं. it. ये नहीं इसको कैसे बढ़ाना है. That's not the thinking of devotee. ये भक्त का सोचने का तरीका नहीं Devotee होता. means how do I get free from the strength of that family attraction and attachment? भक्त का मतलब होता है कैसे इस पारिवारिक आकर्षण स्नेह आसक्ति से मैं मुक्त हो सकूं. And because it's so deep rooted और ये क्योंकि इतनी गहराई तक जड़ा that it says हुआ है. simply if you agree to hear Hari-katha Krishna-katha from right source, from bona fide source, सरल तरीके से आप सहमत होते हैं हरि कथा कृष्ण कथा सही स्रोत से सुनने even के we have no other हो सकता है qualification, आपके पास कोई योग्यता ना हो. by that mercy of Sadhu Guru Vaishnava उस साधु गुरु वैष्णव की कृपा से, and mercy of Sri Chaitanya श्री Mahaprabhu, चैतन्य महाप्रभु की who कृपा has से, given us this prescription, जिन्होंने हमें ये सलाह दी है, you can find permanent freedom in your life आपको पूर्ण आजादी अपने जीवन and get freed from all of this anxiety and suffering और condition. सारी चिंताओं दुखों से आप मुक्त हो सकते हैं. Prabhupada says in the age of Kali is full of sins and sinful तो reactions. बात बताएं कलयुग में पूरा पापों से भरा हुआ जगह है. Everyone's enjoying. सभी मजे कर रहे हैं. Right? We have Himalayan mountains of sin and sinful reactions. हमारे हिमालय पर्वत जैसे पाप कर्मों के How फल. much enjoyment is that? कितना मजा आ रहा है. How peaceful is your mind and senses sitting in a pile of Himalayan mountains of sin and sinful reactions? कितना शांत है आपका मन और इंद्रिय हिमालय पर्वत जैसे पाप और पाप कर्म प्रतिक्रियाओं के ऊपर बैठकर. And then we're like, oh, I'm happy. कह रहे हैं कि हाँ मैं I खुश feel हूँ, pretty good. मुझे अच्छा लग रहा है, I feel positive. मुझे सकारात्मक लग रहा है. Maharaj, you're being too negative. महाराज कुछ ज्यादा ही नकारात्मक बात करते हैं. You're being too pessimistic. आप कुछ ज्यादा ही सक्रिय. I'm sorry, I'm just seeing this Himalayan mountain मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे ये हिमालय of पर्वत दिखाई sin दे रहा and है. sinful reaction, पापों का which is forcing the ignorance and suffering on all the living जो entities. सारे जीवात्माओं को दुख में अज्ञान में Those डालता who जा are रहा है. smart and wise will understand this is my जो condition. बुद्धिमान है चतुर है समझ पाएंगे ये मेरी स्थिति है. How do you get free from all of this? कैसे मैं इससे मुक्त हो सकता How हूँ. do you get free from all of this suffering and all this ignorance which is कैसे- causing that? कैसे मैं सारे दुखों से सारे अज्ञान से मुक्त हो सकता हूँ जिसकी वजह से इस सारे दुखों में मैं हूँ. How do you clean up the heart and कैसे consciousness? मैं अपने हृदय और चेतना को साफ कर सकता हूँ. But in Kali Yuga, because of all the sinful reactions, the people are more and more addicted. और कलयुग में इतने सारे पाप कर्मों के फलों के कारण लोग इतने ज्यादा So much sinful reactions. इतना ज्यादा पाप And कर्मों we're का फल still है. more addicted, और and फिर we भी want हमें more addiction, नशा लगा हुआ है, and more और sinful नशा, activities, और and पाप more कर्म का sinful नशा, और reactions. पाप कर्मों का फल. Because it's going to make me happy. क्योंकि ये मुझे खुश करेगा. So in spite of this insanity, इन सारे पागलपन के बावजूद it's almost like you have like zero interest in spiritual life, मतलब बिल्कुल किसी का शून्य रुचि है More or जीवन में, less. कम या ज्यादा. right? But in spite of all of that, लेकिन ये होने के बावजूद if you simply will agree to come and hear and chant about this Krishna Katha, अगर आप सरलता से आके सहमत होते हैं श्रवण और कीर्तन करने के लिए हरि कथा कृष्ण कथा, I mean, you talk about concession, आप देखिए यहाँ छूट देने की. right? Krishna says, you surrender to me, then I'll reward you. कृष्ण कहे आप मुझे शरणागत करो तब मैं आपको फल दूंगा. And no kaitava और dharma, कोई ठगने वाला धर्म नहीं चलेगा. right? If you surrender, I'll free you from Maya, अगर आप शरणागत करेंगे तब मैं माया से मुक्त करूंगा. right? Here Mahaprabhu is saying, even you're completely attached, और महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं आप हो सकता है पूरी तरह आसक्त हो, addicted. पूरी तरह से नशे not even trying to get free from your addiction, you're trying to do more addiction. यहाँ तक कि हम नशे से मुक्त होने का प्रयास नहीं और नशे में घुसने का प्रयास कर रहे हैं. Not even trying to solve the problems of life, trying to increase the problem of life. समस्या को समाधान करने का नहीं और जो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जीवन. And still, if you simply somehow or other you agree to come and hear and chant this Hari-katha Krishna-katha, तब भी अगर आप आके सहमत होते हैं हरि कथा कृष्ण कथा श्रवण और कीर्तन करने के लिए, one is sure to go back to Godhead. कोई भगवत धाम जाना उसका सुनिश्चित है.
Come on. What an offer. क्या क्या प्रस्ताव मिल रहा है? It's like a one-time offer. एक बार मिलने वाला ऑफर है। And we're like, I'm just trying to figure out what Krishna wants me to do. और मैं पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ कृष्णा मुझसे क्या चाहते हैं। I'm trying to understand why I'm so disturbed. मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कि क्यों इतना परेशान हूँ। Therefore, Prabhupada says, इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं people should be trained only to hear, should be trained to hear only Krishna-katha. प्रभुपाद बता रहे लोगों को केवल एक ही प्रशिक्षण देना चाहिए कैसे कृष्ण कथा सुनना है। By all means, सारे तरीकों से in order to get relief ताकि उनको राहत मिल सके from all of these miseries. सारे कष्टों से। So do we feel the misery? क्या हम अपने कष्टों को महसूस कर रहे हैं? Do we realize how much trouble we're actually in? हम देख पा रहे हैं हम कितनी बड़ी मुसीबत में Do we understand how we don't know what to do, what not to क्या हम do? समझ पा रहे हैं हमें पता नहीं है क्या करना है क्या Are नहीं we करना still groping in the dark trying to figure it क्या out? अभी भी हम अंधकार में भटक रहे हैं पता लगाने के लिए। Oh, I'm fighting against Maya. मैं माया के साथ युद्ध How कर are रहा you हूँ। going to fight against Maya? अब माया के साथ क्या युद्ध करेंगे? Krishna says it's Mama कृष्ण Maya. कह रहे हैं ये मेरी माया है Well, I'm trying to control my mind and senses. और मैं अपने मन और इंद्रिय को नियंत्रित How are करने you का going to प्रयास कर रहा control हूँ। your mind and senses? आप अपने मन और इंद्रिय को कैसे नियंत्रित Krishna, करेंगे? Rishikesh, Krishna, he's the master of your mind and senses. कृष्ण ऋषिकेश है वो आपके मन और इंद्रिय के Those स्वामी। are his वो energies. सब उनकी शक्तियाँ हैं। He's the controller of his energies. वो अपनी शक्तियों के नियंत्रण करता है। So I'm trying to control Maya. And I'm trying to control my mind and senses. मैं माया को अपने मन और इंद्रियों को And I'm नियंत्रित करने का fighting प्रयास कर against रहा हूँ। Maya. माया के साथ युद्ध कर रहा हूँ And Krishna says this is Mama और Maya. कृष्ण कह रहे हैं मेरी माया है। So if you want to somehow or other solve the problem, तो किसी तरह से if you अगर आप want इस to get समस्या out का of समाधान trouble, करना चाहते हैं समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं it's like a one-time offer. एक ही बार मिलने वाला ऑफर है ये। Here it is. यहाँ है आपके सामने। Now who can hear that offer? अब कौन इस प्रस्ताव को सुन And पा who रहा can है take advantage of और it? कौन इसका लाभ ले पाएगा? That is what Krishna is seeing. ये कृष्णा देख रहे हैं। Right? Krishna is the witness. कृष्णा गवाह है He's the judge. वो फैसला करेंगे। I mean, it's as simple as possible, जितना ज़्यादा सरल हो सके संभव है and still will not take it. और तब भी हम नहीं ले पा रहे। That's how unfortunate we इतने are. बड़े दुर्भाग्य हैं And then we say, I'm fine. और हम कह रहे हैं मैं ठीक हूँ I'm spiritually well मैं situated. बहुत आध्यात्मिक अच्छी स्थिति में हूँ I love Krishna. मैं कृष्णा से प्रेम करता हूँ But I love Maya. लेकिन मैं माया से भी प्रेम करता हूँ। So this is the only and best means, यही एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है even for the most unqualified and disinterested persons on the planet, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा अयोग्य सबसे ज़्यादा जिनको कोई रुचि नहीं है ऐसे if लोगों they के लिए can भी somehow or other hear Hari-katha Krishna-katha from right source, किसी भी तरीके से अगर हरि कथा कृष्ण कथा सही स्रोत से सुन and पाते हैं somehow or other it penetrates और किसी भी through तरीके से this अगर thick skull, इस मोटे खोपड़ी से अगर चीरते हुए ये घुसता है and the Himalayan mountains of sinful reaction which is covering our soul, और ये हिमालय पर्वत जैसा पाप जो हमारी आत्मा के ऊपर ढका हुआ right? है Everyone wants to glorify Elon Musk, right? सभी लोग इलॉन मस्क की Yeah, because he has this boring device. He can just make these unbelievable tunnels, right? तो वो उन्होंने बोरिंग करने का नया उपकरण निकाला है जो टनल बड़े बड़े सुरंग खोद सकता है Right? He said, I can make a tunnel anywhere. वो कहते हैं मैं कहीं पे भी सुरंग खोद सकता हूँ Right? I got the equipment, मेरे पास सारे I उपकरण got हैं the technology, मेरे I पास got the तकनीक है मेरे engineers. पास सारे इंजीनियर्स Just हैं tell me where you want a tunnel. अब बताइए कहाँ टनल सुरंग बनवाना Right? है But can he tunnel through the Himalayan mountains of our sinful reaction and reach the soul? क्या वो सुरंग बना के हमारे हिमालय पर्वत जैसे पाप कर्मों को Does he छीनते have हुए that technology? आत्मा तक पहुंच सकता है उनके पास ये So तकनीक why है is he glorified? तो उनका क्यों इतना गुणगान किया जा रहा है He's just moving some earth, some stone, some gross elements, isn't वो it? कुछ धरती पत्थर मिट्टी हिला रहा है ये Can he स्थूल move चीज़ the है। most subtle elements? क्या सबसे सूक्ष्म Can he penetrate into the soul? क्या आत्मा को चीरता हुआ Is घुस his सकता है? equipment that sophisticated? क्या उनका उपकरण इतना जटिल है And someone who can, right, is ignored. और जो ये कर सकता है उसको अनदेखा किया जा रहा है Nobody sees the advantage. कोई भी उस लाभ को ढूंढ ही नहीं रहा है Because everybody's seeing this gross material element. कि सभी लोग ये स्थूल उपकरणों
तत्वों को देख रहे हैं and the manipulation of those elements for our simple, easygoing life and sense gratification. और कैसे इन तत्वों को कोई चला रहा है हमारे भौतिक इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए. So how much more simple does it have to be? इससे ज़्यादा और कितना सरल करना होगा. So then it's a question of who should I hear from where I can get that benefit? तो अब एकमात्र प्रश्न होना चाहिए कि मैं किससे जाके सुनूं ताकि मुझे ये लाभ. That's only if you buy this if you accept this offer. Then the only question is, who should I hear from who can speak Hari-katha Krishna-katha with that kind of effectiveness? तो आप प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद एकमात्र प्रश्न ये है मुझे किससे जाके ये सुनना चाहिए ताकि मुझे ऐसा प्रभाव मिल सके. So yeah, okay, I have no qualification. The only hope I have is to hear Hari-katha Krishna-katha. मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, एकमात्र उम्मीद है मेरे पास अगर मैं हरि कथा कृष्ण कथा सुन सकूं. So who's going to have that kind of potency to give me that kind of effect? तो किसके पास इतनी शक्ति है जो मुझे मेरे अंदर ऐसा प्रभाव दे सकता है. Because some sentimental, theoretical understanding and presentation is useless. क्योंकि कुछ भावुक मौखिक भावनात्मक प्रस्तुति बेकार है. It's a powerless. शक्तिहीन है. It's sentimental. भावुक बातें. That's not going to bore a hole through Himalayan mountains of sinful reaction. ये सुरंग नहीं बना सकता है हमारे हिमालय पर्वत जैसे पाप कर्मों को चीरता हुआ. That guitar will just like on the outside just scratch like the outermost sinful reaction. It'll give a massage to your outermost sinful reaction, you know. ऐसा कथा आपके जो हिमालय पर्वत के सबसे ऊपरी परत को मसाज करेगा, बस खरोच डाल सकता है. That's about the effect of the penetration of that message. उनके संदेश को सुन के आपको ये केवल ये प्रभाव मिलेगा. Massaging your sinful reactions, making them feel better because they have to wait in line to punish you. आपके So पाप they're कर्म getting agitated. They're waiting, you know. पाप कर्मों के I gotta punish this guy. मसाज मिल रहा है और बाद में ताकि वो आपको उसी पाप कर्म का दंड मिलने वाला हो कि मुझे इस व्यक्ति को दंड देना है इस They're पाप. waiting in the queue. वो लाइन में इंतजार कर रहे हैं सारे पापों का फल हमारे लिए. Yeah, waiting in the queue. वो कतार में इंतजार कर रहे हैं. All the sinful reactions waiting in the queue. सारे पाप कर्मों का फल कतार में And हमारे if लिए you ask इंतजार the कर रहे man, हैं. how you doing? He said, fine. और किसी को पूछेंगे आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा. Well situated. बहुत अच्छी स्थिति में. Everything going great. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. Any questions? कोई प्रश्न? It's pretty simple, straightforward instruction, बहुत right? सरल सीधा सीधा निर्देश है. Because it's identified the problem. क्योंकि समस्या को इसने पता लगा लिया. We don't even understand the हम तो problem. समस्या को समझ नहीं We पाते. don't even know what we need. हमें पता ही नहीं हमारी जरूरत क्या है. It's almost like in 26th Avenue in New York, right? ऐसा ही जैसे 26th Avenue न्यूयॉर्क में जैसा था. So Prabhupada is speaking there with the devotees. तो प्रभुपाद वहाँ भक्तों के बीच में बातचीत कर रहे थे. And then just some alcoholic, drunk, drug addict is just walking up the street. और कोई शराबी नशा करके रास्ते पे चलता हुआ आ रहा है. And then he just hears like something going on inside of that room. और उसे सुनाई दे रहा है कमरे के अंदर कुछ हो रहा है. And he just stumbles in the door. और वो दरवाजे में से टकराता हुआ घुस जाता है अंदर. And he stinks, he smells, hasn't taken a shower in a month. और उससे बदबू आ रही है. वो महीनों तक उसने नहाया नहीं है. Or maybe longer. या उससे भी ज़्यादा. Right? And just happens to come into that room while Srila Prabhupada is speaking Hari-katha Krishna-katha. और किसी तरह से वो उस कमरे में आ गया जहाँ श्रील प्रभुपाद हरि कथा कृष्ण कथा बोल रहे थे. This is Agyata Sukriti. जिसे कहते हैं अज्ञात स्वीकृति. Unknown. They don't even know what are they doing. उनको पता पूरा अज्ञान में उनको पता ही नहीं वो कर क्या रहा है. And then he came with some toilet paper. He wanted to offer the toilet paper. और वो कुछ टॉयलेट पेपर लेके देने के लिए आ रहे हैं. And everyone's like, no. सभी कह रहे हैं नहीं. And Prabhupada said, no, why are you stopping him? प्रभुपाद ने कहा नहीं, उनको क्यों रोका जा रहा है? He's doing devotional service. वो भी भक्ति कर रहा है. He wants to make some service. He wants to make some offering. वो कुछ सेवा करना चाहता है, कुछ अर्पण करने के लिए लेकर आया है. That is sadhu. ये That is होता है Vaishnava. साधु, ये होता है वैष्णव. They can understand that point. वो उस बात को समझ सकते हैं. And everyone else said, oh, he's a bum. He's a degenerate. Right? He stinks. Right? Get him out of here. सभी लोग कहेंगे ये कैसा बदबू मार रहा है, इसको बाहर निकालो यहाँ से. And Srila Prabhupada was thinking, here's Krishna sent him here. और श्रील प्रभुपाद देख रहे हैं कि हाँ कृष्ण ने इनको यहाँ भेजा है किसी Some तरीके से, special mercy. किसी विशेष कृपा से. So let's try to help him. चलिए उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं. Let him hear the kirtan, Hari-katha Krishna-katha. कीर्तन हरि कथा कृष्ण कथा सुनने देते हैं. That's a medicine. ये है दवा. And give them और prasadam. उनको प्रसाद दीजिए.
Bhaktivinoda Thakur said you can purify the 3 worlds by Krishna Prasad. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं आप तीनों लोगों को प्रसाद देके शुद्ध कर सकते हैं। So if you give them Krishna Prasadam, अगर आप उनको कृष्ण प्रसाद देंगे, sometimes they didn't give some prasad, Prabhupada became furious. कभी-कभी वो प्रसाद नहीं देते थे, प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आ जाता था। He said, no, you must give. Even if you don't have anything, give them some apple or some cookie or something, right? आपके पास कुछ नहीं भी हो, कुछ सेब दीजिए, कुछ कुकी दीजिए, कुछ केला दीजिए। Dave is nervous because he didn't make cookies tonight. देवा थोड़े सहम हैं, आज वो कुकी बनाकर नहीं लाए हैं। So you give them some prasadam तो कुछ प्रसाद दीजिए आप। and give them that medicine, the Hari-katha Krishna-katha. हरिकथा कृष्ण कथा दवा दीजिए। Somehow or other, if it touches the ear, किसी तरीके से अगर ये कानों से टकराता है and Krishna empowering. और कृष्णा उसमें शक्ति कर, It says unless you're empowered by Mahaprabhu, you cannot be preacher. कहते हैं अगर आप महाप्रभु से शक्तिकरण प्राप्त नहीं किया हो आपने तो आप प्रचारक नहीं बन सकते। Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said this is the only shortage in this world, real sadhu sangha. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे इस भौतिक जगत में एक ही मात्र कमी है, साधु संग की। Oh, big temples, big flowers, big festivals, big celebrations, right? But no Shuddha Bhakta, no Premi Bhakta. बड़ा मंदिर, बड़े फूल, बड़े उत्सव, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं। That's the only shortage. यही एकमात्र कमी। Beautiful temple, बहुत सुंदर मंदिर, beautiful deities, बहुत सुंदर विग्रह, right? Beautiful decorations, बहुत सुंदर सजावट, big festival, बहुत बड़ा big महोत्सव, prasadam, बहुत सारा प्रसाद, big everything. सब कुछ बड़ा, But no Hari-katha लेकिन Krishna. कोई हरि कथा, No कृष्ण कथा, Shakti. कोई शक्ति नहीं। You can say, okay, intellectually he quoted this shloka and yes, that's in the Bhagavatam. Okay. आप कह सकते हैं बुद्धि लगा के हाँ उसने भागवतम से कोई श्लोक बताया। Then what happened? फिर उसके बाद हुआ क्या? Nothing. कुछ भी। Nothing changes. कुछ भी बदला ही It नहीं। all stays the same. सब कुछ वैसा ही का वैसा। Does it? ऐसा है या नहीं? Any other questions? कोई अन्य प्रश्न? Krishna is helping me. कृष्ण मेरी Because मदद I कर didn't रहे know what I was supposed to say to हैं। them. मुझे पता नहीं था मैं क्या बातें करूँगा। But I knew I wasn't going to ask you what you want to think. लेकिन मुझे पता था मैं किसी को पूछूंगा नहीं आप क्या सोच रहे हैं। I wasn't going to do that to myself again. मैं अपने साथ वो दोबारा नहीं करने वाला। Might as well shoot myself in the head. उससे पहले मैं अपने आप को सर में गोली मार लूँ। Is there anything on your mind? क्या आपके मन में कुछ बात चल रही है? Krishna. Hare Krishna Srila Gurudev. I would like to know that you said. You would like to know what? What would you like to know? क्या जानना चाहते हैं आप? That this, it's the only question is from whom we should hear this Krishna Katha. Then. Thank you for reminding me about my point. That brings me back to the point. Thank you very much. You see how Krishna is helping me? देखिए कृष्ण मेरी कैसे मेरी मदद कर रहे हैं। मैं जो बात करने Sometimes जा I रहा get हूँ carried away, you कभी-कभी मैं know. थोड़ा भटक जाता हूँ। मैं वापस आ गया अपनी बात। Then Krishna's like, okay, slow down now. Relax. थोड़ा धीरे जाओ। Let's get back onto the point. चलो वापस अपने बात पे आते हैं। Okay, so who are we supposed to hear तो from? हमें किनसे सुनना चाहिए? प्रभु This का is a सवाल very यही है। important question. Thank you for reminding me. बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए। Because if you agree, yes, okay, I agree. I need to do that kind of hearing. क्योंकि आप सहमत हो चुके हैं। मुझे इस तरीके से सुनना है। मैं सुनना चाहता हूँ। So who am I supposed to hear from? अब मैं किससे सुनूं? Right? There's so many preachers are there. बहुत सारे प्रचारक हैं। So many gurus are बहुत there. सारे गुरु हैं। We've heard most of those preachers and और gurus. ज़्यादातर उन प्रचारक और गुरु को हमने सुना है। So what was the effect? तो प्रभाव क्या हुआ उनसे सुन के? We should study the effect. हमें प्रभाव को अध्ययन करना चाहिए। Right? If you don't get the effect that you want, that means that Krishna is not involved in that transaction. अगर आपके अंदर वो प्रभाव नहीं दिखा जो आप चाहते हैं, इसका मतलब कृष्णा उस आदान प्रदान में मौजूद नहीं है। Because if Krishna is involved in that transaction, there has to be an undeniable spiritual result. क्योंकि अगर कृष्णा उस आदान प्रदान में मौजूद थे, तो वहाँ अविश्वसनीय प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। That's why it says, unless one is bona fide and इसलिए authorized बताया जाता है अगर कोई प्रमाणिक है, अधिकार जिसने प्राप्त from किया है, Mahaprabhu, from Krishna. महाप्रभु से, कृष्ण से। When they asked Srila Prabhupada, after you, who will be the guru in ISKCON? तब श्रील प्रभुपाद से पूछा गया, आपके बाद इस्कॉन के अगले गुरु कौन Who हैं? will be the leader of ISKCON? कौन इस्कॉन का नेतृत्व करेगा? Srila Prabhupada said, Krishna will say. श्रील प्रभुपाद ने कहा, कृष्णा बताएंगे।
Bona fide gurus pure by a medium of Krishna. प्रमाणिक गुरु कृष्णा के शुद्ध माध्यम होते हैं। So who Krishna wants to use to speak through, that's up to तो Krishna. कृष्णा किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी बात बोलने के लिए, ये कृष्णा Prabhupada के हाथ में। perfectly understands this point. प्रभुपाद इस बात को बिल्कुल सही तरीके से So समझते who हैं। Krishna wants to manifest and speak through, that person will be ordered and authorized from Krishna. तो जिस व्यक्ति के माध्यम से कृष्णा बात करना चाहते हैं उसी व्यक्ति को कृष्णा आदेश और अधिकार देंगे। But everybody is saying they're bona fide and authorized. लेकिन सभी कह रहे हैं कि उनको प्रमाणिक है, वो अधिकार But everybody is talking about Krishna, सभी लोग कृष्णा कृष्णा की बात कर रहे talking some philosophy. हैं, कुछ सिद्धांत की बात कर रहे But is that coming from Krishna? Is that empowered katha? हैं। क्या वो कृष्णा से आ रहा है, उस कथा में Is सशक्तिकरण that है? Shabda Brahma? Is that transcendental sound vibration? क्या वो शब्द ब्रह्म है, दिव्य शब्द है? Is that food for your soul? क्या आपकी आत्मा को भोजन मिल रहा Or है, is it just some gyan या बस केवल कुछ ज्ञान दिया जा रहा है? or some storytelling? कहानी सुनाने वाले कथाकार हैं, They want to tell some story. कुछ कहानी सुनाना चाहते हैं। Oh, the yogis in the sky! Whoa! योगी है, Hanuman! Hanuman! Ah, ah, ah! And all the- Where's Hanuman? Where's Hanuman? कहाँ है? Is Hanuman here? क्या हनुमान यहाँ है? Huh? Is he in the room with us? Right, is Hanuman here? क्या हनुमान I यहाँ है? feel it. I feel he's there. हाँ, मुझे महसूस हो रहा है। No tattva. कोई तत्व नहीं, No siddhanta. कोई सिद्धांत नहीं, Not Guru Sadhu Shastra. गुरु साधु शास्त्र They're not नहीं, scientific. कुछ वैज्ञानिक They're not नहीं, empowered. कोई सशक्तिकरण नहीं, They're speculating. बस मनोधर्म है, They're concocting. बनावट कर रहे हैं, They're changing. बदल They're रहे हैं, manufacturing. निर्माण कर रहे हैं, They're twisting. तोड़ मरोड़ They're कर रहे हैं, adding. They're जोड़ subtracting. रहे हैं, घटा रहे हैं, That means, what is it? Asara. यानी कि ये बेकार है, That असर, means it's useless, powerless. फालतू शक्ति है, No Shakti. कोई शक्ति नहीं। So what's the point? तो क्या मतलब है इन सब चीजों का? What's the point? क्या मतलब है? So when someone tell me, hey, come and listen to this Maharaj, I'm like, forget it, I don't want to go there. कोई मुझे कहता था आईएएस महाराज से कहता भूल जाओ, मैं नहीं आने वाला। I was thinking, they're all more or less the same. मैं सोचता था सभी एक कम या ज्यादा एक जैसे ही होते हैं। I'm not satisfied, not convinced. मैं संतुष्ट नहीं था, मैं आश्वस्त नहीं था, Because no effect, no benefit. क्योंकि कोई प्रभाव नहीं, कुछ लाभ नहीं दिख रहा। So why bother? क्यों फिर अपनी परेशानी उठाना? Am I too skeptical? क्या मैं कुछ ज्यादा ही गलती निकाल रहा हूँ? I'm just being practical. मैं बहुत व्यावहारिक बात कर रहा हूँ। Then somehow Krishna made arrangement to meet the real guru. तो कृष्णा ने किसी तरह व्यवस्था बनाई असल गुरु से मिलने के लिए। So I was very surprised. तो मैं बहुत आश्चर्य में था, Because I thought everybody more or less the same. क्योंकि मैं सोचता था सभी लोग कम ज्यादा एक जैसे ही होते But हैं। that katha लेकिन वो कथा and that message और वो संदेश and that और effect वो प्रभाव was heaven and hell different. स्वर्ग और नरक के जैसा अंतर था। Then you can understand the difference. तब आप अंतर समझ पाएंगे। Did I answer your question? क्या आपके सवाल का उत्तर हुआ? More. और Give me more. Let's see what else you have. और दीजिए, चलिए देखते हैं और क्या है आपके पास। So Gurudev, like when you are speaking that Krishna Katha, I am feeling the effect. Are you feeling any effect? Yeah, many times. Really? Yeah. Am I scaring you? Inspiring me more. He's feeling some effect. I'm scared of this man. तो ये मेरी कथा सुन के इनको कुछ प्रभाव दिख रहा है, प्रभु कह रहे हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं आपको डर, ये इनको डर लग रहा है। He's talking too boldly. ये कुछ ज्यादा ही हिम्मत से बात कर रहे It's हैं, very aggressive. बहुत अकड़ के साथ बात कर रहे It's हैं, very confrontational. ये बहुत ज्यादा सच्चाई बोल रहे हैं, It's jolting me. ये मुझे हिला रहे हैं। Yeah, some people complain like just like it's jolting me. कुछ लोग मुझे शिकायत करते हैं, ये मुझे हिला देते But हैं। don't we need to be jolted? क्या हमें हिलाने की जरूरत नहीं है? Otherwise, it's just like stuck. वरना हम फंसे रहते हैं, बस You're stuck in the mud. कीचड़ में फंसे रहते हैं। Well, I'm just practicing spiritual life. भक्ति का अभ्यास कर रहा हूँ। So uninspired, man. कोई प्रेरणा ही नहीं है। But at least it's spiritual. कम से कम भक्ति कर रहा हूँ। It's supposed to be joyfully performed. पूरे आनंद से इसको किया जाना चाहिए।
Sometimes I hear the kirtan out here, I feel like somebody died. कभी-कभी मैं यहाँ कीर्तन सुन रहा होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई यहाँ मर गया। I come out, I'm like, did somebody leave the body? You मैं know? बाहर आके पूछता हूँ, कोई आके कोई यहाँ मर गया था क्या? It's so depressing, you know. मुझे इतना निराश हो गया। Who led the kirtan? कीर्तन कौन लीड कर रहा था? He led? Who was leading kirtan tonight? Sanatan? Did he start? Yeah. That was the best kirtan I ever heard you give. तो इन्होंने जो शुरुआत की थी सबसे अच्छी कीर्तन जो मैंने आज तक सुनी थी। Sanatan is back. सनातन वापस आ चुके हैं। Hari Bol! Hare Krishna. Don't think I'm not listening. आप ये मत सोचिए मैं सुनता नहीं हूँ। I'm listening very closely. मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। Don't think I'm just walking out here. Oh, I gotta give the class. ये मत सोचिए मैं वहाँ तक सोचता रहता हूँ मुझे क्लास देना है। That was my turn. अब मेरी बारी है। So what are we talking about here? और क्या हम बात कर रहे हैं? Then when you are not here, so whom do I hear now? When you are not here physically I present? can't hear you now. Thus, when you are not physically present here, so that I can come and hear from you. You're not present here? When not physically present, so whom do I hear? He's saying First figure out when he's present how to hear him. तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं जब आप यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे तब मैं कैसे किससे सुनूंगा? तो गुरुदेव बता रहे हैं पहले आप ये चिंता कीजिए जब यहाँ हैं तब मैं कैसे सुनूंगा? He's worrying about what if the guru's not present, right? How do you hear? And I'm trying to figure out, can you learn how to hear while he's here, while he's present? ये चिंता Let's कर रहे start with that, you know? ये चिंता कर रहे हैं कि जब गुरु यहाँ नहीं होंगे तो मैं कैसे सुन पाऊंगा? मैं ये चिंता कर रहा हूँ अभी ये कैसे सीख पाएंगे कि अभी एक जो मैं बता रहा हूँ कम से कम कैसे सुन पाए? Well, I can't hear you now, but when you leave, how will I be able to hear you? मैं अभी आपको सुन नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप जब चले जाएंगे तब मैं कैसे आपको सुनूंगा? That'll be a problem. तब समस्या होने वाली है। It's a problem now if you can't hear me. समस्या अभी है। Right? So solve the problem while he's here, right? समस्या जब है उसी समय समाधान कीजिए। And then if it penetrates and you hear it, then you'll understand how to hear it, continue to hear और it. जब ये चीरते हुए अंदर घुस पाएगा आप सुन पाएंगे तब आप समझ पाएंगे कैसे इसको सुनते रहना आप जारी रख सकते हैं। What I heard, what I'm hearing, that's what I'm speaking. जो मैंने सुना जो मैंने प्राप्त किया वो मैं बोल रहा हूँ। So I'm speaking what I need to hear. तो मैं वो बोल रहा हूँ जो मुझे सुनने की जरूरत है। This is what I need to hear. ये मुझे सुनने की जरूरत Now, है। if you can hear it also, लेकिन fantastic. अगर आप भी इसको सुन पा रहे हैं तो बहुत अच्छा Then है। you're also blessed. You also get the benefit. तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा आपको भी लाभ मिलेगा। I'm preaching the truth that I need to hear. मैं वो सत्य प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ जो मैं For सुनना my चाहता हूँ। own spiritual purification and benefit. मेरे खुद के आध्यात्मिक शुद्धिकरण और मेरे लाभ To के be लिए। reminded what Guru Krishna, Guru Sadhu Shastra have presented to us. ताकि मुझे वो ये स्मरण आ सके जो गुरु साधु शास्त्र ने मेरे सामने प्रस्तुत किया। Right? Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. That way you can remember it. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। If you don't hear it, you cannot speak it, you'll not remember it. अगर आप सुन नहीं पाएंगे आप बोल नहीं पाएंगे आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। So if you can also hear it and be benefited, fantastic. I'm happy for तो you. आप भी अगर इसको सुन पा रहे हैं आप इसका लाभ ले पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया। मैं आपके We लिए want बहुत खुश हूं। everybody to get mercy. हम सभी को चाहते हैं कृपा मिलना। Now, Prabhupada says, even if you don't have any great interest or great qualifications, still, if you can somehow or other hear it, let it touch your ear, you'll get some benefit. प्रभुपाद बताते हैं अगर आपको हो सकता है कि आपके पास कोई योग्यता ना हो आपको कोई रुचि ना हो फिर भी किसी तरह से आपके कानों से टकराए तो आपको कुछ लाभ मिलेगा। But if you are seriously attentive hearing, लेकिन आप बहुत गंभीरता से ध्यान लगा with a great eagerness बहुत उत्सुकता से and a perfect anxiety to understand it, और पूर्ण व्याकुलता से मैं कैसे इसको समझ सकता हूँ then how much more benefited will you be? तो आपको और कितना ज्यादा लाभ मिलेगा। Just imagine. आप कल्पना कीजिए। So if someone who has no interest, qualification, or desire can get benefit, what if you're very intense in your hearing? और किसी को कोई योग्यता नहीं है कोई रुचि नहीं उनको लाभ मिल सकता है। क्या होगा अगर आप बहुत ध्यान And greedy to get the information और लोभ के साथ करें मुझे ये जानकारी जाननी है so that you can understand and solve everything. ताकि आप सब कुछ समझ सके सारा समाधान कर सके। So what about that quality of hearing? उस तरह के श्रवण का क्या कहना? Then you'll be greatly benefited. तब आपको बहुत लाभ मिलेगा। All right? ठीक है।
Hare Krishna. Hare Krishna Guruji. I feel very lucky to be here. Hare Krishna. I didn't scare you? आपको डर नहीं लगा मुझसे? May Not yet? no. Oh, अभी good. तक नहीं, चलो ठीक है। Still, I have a question that I am 23 years old and for last 2 years I try to find the purpose of my life, but still don't get the purpose. What should I do with my life? I mean, You wanted to know, right? yes, I wanted to know. I am very eager to And know. Krishna brought you here. तो आप बहुत गंभीरता से जानना Not चाहते maybe, you're here, right? Yeah, I am It's like maybe I'm here. हैं? हाँ, हो सकता है मैं यहाँ हूँ, नहीं आप यहाँ यहीं हैं अभी। Let him Yes, I translate, am. let him translate. तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं आज यहाँ आ पाया और मैं 23 साल का हूँ और मैं कुछ समय से समझने का प्रयास कर रहा था मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मुझे So, बता रहे हैं yeah. तभी तो आप यहाँ आए हैं और यहाँ I gotta beat him. Go ahead. You finished? या Okay. please. I want to know that what's the purpose of my life. That's it. What's the purpose of your life? प्रभु जानना चाहते हैं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। You've been trying to understand what is the purpose of your life for 2 years, right? तो आप 2 सालों से अपने जीवन का उद्देश्य समझने का प्रयास कर रहे थे। Yes. And are you praying to God, you're praying to Krishna to understand what is the purpose of my life? और क्या आप कृष्णा से प्रार्थना कर रहे थे भगवान से मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? Yes, I am trying. I want to devote myself 100%, but I won't. Okay, what? He's saying he want to devote 100%, 100%. But I can't. Huh? but he's not able to do. Yeah, but your desire is to want to devote 100%, लेकिन right? आपकी इच्छा है कि आप 100% अपने आप को लगा सकें, ऐसा है या नहीं? Yes. And you're praying to Krishna about that, और right? आप कृष्णा की ओर प्रार्थना कर रहे हैं इसके लिए। Yes, I am. So how is it if Krishna knows you want to fully surrender to him, why would Krishna send you here? तो अगर आप इस तरह से आपकी पूरी इच्छा है, आप जानना चाहते हैं, तो क्यों कृष्णा ने आपको यहाँ भेजा है? Maybe to ask the question to the right person. Exactly. हो सकता है ये सही सवाल पूछने के लिए सही आदमी से, इसलिए मुझे आपसे भेजा। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल सही है, Because you want to know. क्योंकि आप जानना चाहते हैं, But you can't hear लेकिन Krishna, आप कृष्ण को सुन नहीं सकते हैं, right? ऐसा है या नहीं? But you still really, really want to know लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं 100% 100% how to surrender to कैसे Krishna, कृष्ण को मैं how to शरणागत serve करूं, कैसे मैं Krishna, कृष्ण की सेवा करूं, right? ऐसा है या How to नहीं? use your life in that service, कैसे right? अपने जीवन को हम कृष्ण की सेवा में लगाएं, ऐसा है या नहीं? Yes, not only Krishna, but we have to live in materialistic life, so we have to do something for the society or something for ourselves. So that's how I want to figure out what should I do. Surrender to Krishna. तो प्रभु बता रहे हैं कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि भौतिक जीवन में भी हूँ और बाकी अन्य लोगों को भी कैसे मैं सेवा कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, साथ ही साथ कृष्ण गुरुदेव बता रहे हैं कृष्ण को शरणागत कीजिए। That's the first duty. ये पहला कर्तव्य है, That's the first ये priority. सबसे पहली प्राथमिकता है, That's a Sanatan ये है Dharma. सनातन धर्म, That's eternal occupation of the soul. ये है आत्मा का नित्य धर्म, So that's first priority, ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी to चाहिए, surrender to Krishna. कृष्ण को शरणागत करने If की। you surrender to Krishna, then Krishna will tell you what to do. अगर आप कृष्ण को शरणागत करेंगे तब आपको कृष्ण बताएंगे कि वो आप क्या आपसे चाहते हैं, Whether you should be married or not married, whether you should do this service or that service, Krishna will tell you. कि आपको विवाह करना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, ये सेवा करनी चाहिए, वो सेवा करनी चाहिए, कृष्ण आपको बताएंगे। Once Arjuna surrendered to Krishna एक बार जब अर्जुन ने कृष्ण को and शरणागत कर लिया accepted him as his और guru, उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, then he's asked Krishna, please tell me decisively, specifically, what is my duty? तब उन्होंने कृष्ण से पूछा मुझे निश्चित रूप से विशेष करके बताइए मेरा क्या कर्तव्य है। So first surrender to Krishna पहले कृष्ण को and शरणागत say, किया I am your eternal servant. और बोलना मैं आपका नित्य दास हूँ, For so long I'm serving Maya. इतने लंबे समय से मैं माया की सेवा कर Now रहा I हूँ, want to be not Maya Das but Krishna अब Das. मैं माया दास नहीं कृष्ण दास बनना चाहता हूँ। So please kindly तो कृपया करके help me to understand what is my duty. How can I do it? What should I do? मुझे समझने में मदद कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। But Then Krishna will help you. तब कृष्ण आपकी मदद I करेंगे। am trying since a long time, but still don't get the answer. He's trying since long time but not getting any answer. I know.
मुझे पता है, वो कह रहे हैं मैं बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं, मुझे कोई उत्तर Arjuna नहीं was मिल रहा। trying for a long time to figure out what is his problem. देव कह रहे हैं मुझे पता है, अर्जुन बहुत लंबे समय से पता लगाने का प्रयास कर रहे थे उनकी And समस्या he was क्या है, trying to solve his और problem, वो अपनी समस्या का समाधान करने का भी प्रयास कर रहे थे, spiritually and materially. आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक He रूप से भी। exhausted all of his और intelligence, सारी बुद्धि उनकी जब all थक of गई, his thoughts and speculations, सारा विचार, सारा all मनोरंजन, of the different ideas and plans. सारे विचार, सारी योजनाएं, He exhausted everything he had, still he could not understand why I could not do anything spiritually or सब materially. कुछ लगा के जब वो थक गए तब भी समझ नहीं पाए ना कुछ मैं भौतिक आध्यात्मिक रूप से क्यों कुछ नहीं कर पा रहा। Then he admitted his defeat, तब उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, that he is not coming to the right वो conclusion. सही निष्कर्ष पे मैं नहीं पहुंच पा रहा। Then he surrendered to तब Krishna उन्होंने कृष्ण को and शरणागत said, कर now I'm soul surrendered unto लिया। you. अब मैं आपको आत्मसमर्पण करता हूँ, Please kindly direct me, tell me what is to be done. कृपया करके मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे क्या करना चाहिए। I am always telling these things to Krishna, but still I am not getting That's answer. it's funny because the exact thing that he's asking for, right? Krishna has put him in this room and he's not connecting this situation with Krishna fulfilling his desire and his prayers to Krishna. तो वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि जो इच्छा थी उसी इच्छा को पूरा करने के लिए आज कृष्णा ने उनको यहाँ भेजा है। आप उनको दोनों को जोड़ कर देखिए, आपके अंदर ये इच्छा थी, उसी को सुनने के लिए कृष्णा ने आपको आज यहाँ भेजा। So it's not coincidence that you're here, तो ये कोई संयोग नहीं है कि आप यहाँ आए हैं, because the spiritual master, he is representative of क्योंकि Krishna. आध्यात्मिक गुरु कृष्णा के प्रतिनिधि हैं And he knows what is Krishna's intention for every living entity. और उनको कृष्णा का सभी जीवों के प्रति क्या उद्देश्य है उनको बहुत अच्छे तरीके And से। bona fide guru is pure via medium of Krishna. और प्रमाणिक गुरु कृष्णा के शुद्ध माध्यम होते हैं, So he has the power of attorney from Krishna, Krishna Mahaprabhu Parampara. और उनको कृष्णा महाप्रभु की परंपरा से अधिकार मिला है। So that means they're bona fide and they're तो authorized वो प्रमाणिक हैं, उनको अधिकार प्राप्त है, to act on behalf of the Lord, वो भगवान की तरफ से कार्य कर रहे हैं, how to engage other living entities and connect them in this devotional service to the Lord. कैसे सभी जीवात्माओं को नियुक्त किया जाए और भगवान की भक्ति में सेवा में लगाया जा सके। I get my point. I get my point. You got your point? Yes, कह रहे thank हैं you. मैं आपकी बात समझ Krishna गया। is in your heart. कृष्ण आपके हृदय में है, He giving you intelligence and faith to understand it. वो आपको बुद्धि दे रहे हैं, श्रद्धा दे रहे हैं समझने के लिए। So Krishna going to speak through his devotee, तो कृष्ण अपने भक्त के माध्यम से बोलेंगे, not directly. सीधे सीधे नहीं बोलेंगे। Only Paramatma Chaitya Guru will give you intelligence and faith. Who is his bona fide authorized representative? परमात्मा चैत्य गुरु आपको बुद्धि देंगे, श्रद्धा देंगे, कौन है उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि। And when Krishna gives you that intelligence and faith, then you'll surrender there. और जब कृष्ण आपको ऐसी बुद्धि श्रद्धा देंगे तब आप वहाँ शरणागत कीजिए, Then you should surrender तब आपको there. वहाँ शरणागत करना चाहिए, Then you get Krishna's mercy तब आपको कृष्ण की कृपा मिलेगी and Guru's और mercy. गुरु की कृपा मिलेगी, And by that mercy, you'll understand exactly how to proceed forward in your और उस life कृपा से आप बिल्कुल सही तरीके से समझ पाएंगे आपके आध्यात्मिक जीवन under को the कैसे आगे guidance, बढ़ना है, protection of Guru and Krishna. गुरु और कृष्ण के मार्गदर्शन में, रक्षण में। Then you'll serve in the Guru Krishna samsara, तब आप गुरु कृष्ण संसार में सेवा करेंगे, not the Maya samsara. माया संसार में नहीं। And that will solve your spiritual problem, it will solve your material और ये problem. आपकी आध्यात्मिक भौतिक समस्या को खत्म कर देगा, Everything will be solved. सब कुछ समाधान हो जाएगा। Just by that one act of surrender to Krishna, केवल उस एक कृष्णा को शरणागति से every other thing will be solved. हर एक चीज समाधान हो जाएगी। And if you try to solve all of these things without surrendering to Krishna, nothing will get solved. और आप इन सारी चीजों का समाधान करने का प्रयास करेंगे कृष्ण को शरणागत करने को छोड़कर, तो कुछ भी समाधान नहीं निकलेगा। It'll only become more and more entangling, आप और ज्यादा बंधन में बंधेंगे, more and more bewildering, और ज्यादा भ्रमित होंगे, and you'll have to suffer. और फिर आपको दुख भोगना होगा। You'll be in a great perplexity. बहुत बड़ी उलझन में होंगे आप, Complexity, perplexity. जटिलता में, What to उलझन do, में, what not to do. क्या करना है क्या नहीं करना, Means no peace. मतलब कोई शांति नहीं, No peace means no happiness. कोई शांति नहीं मतलब कोई सुख नहीं, So that is not real, obviously, solution. तो वो असल कोई समाधान नहीं है। Alright? ठीक है, You're not here by coincidence. आप कुछ संयोग से यहाँ नहीं आए हैं,
Krishna knows what you're thinking and what are you desiring. कृष्णा को पता है आप क्या सोच रहे हैं, क्या इच्छा कर रहे हैं, And somehow he brought you here. और किसी तरह से वो आपको यहाँ लेकर आए हैं। Do you understand that? क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? Yes. So you want to tell that everything is decided. Is everything decided? Everything's decided? Yes. Only you have to decide. तो सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ पहले से निर्धारित है। तो गुरुदेव बता रहे हैं आपको निर्धारित करना है। Guru Krishna decided. गुरु कृष्ण ने निर्धारित किया है, Now you have to decide. अब आपको निर्णय करना है। All right? ठीक है, I hope you decide smartly और मुझे उम्मीद है आप चतुराई से निर्णय लेंगे for your benefit and to fulfill your spiritual desire. खुद के लाभ के लिए, और ये आपकी आध्यात्मिक इच्छा को Because पूरा that's how करेगा, Krishna is helping you. क्योंकि इसी तरीके से कृष्ण आपकी मदद कर रहे हैं। We're prepared to help you on behalf of Krishna. हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं कृष्ण की तरफ से। If you really want to surrender and serve Krishna, अगर आप then it's our responsibility to help you. अगर आप असल में कृष्ण का शरणागत सेवा करना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, हम आपकी मदद करेंगे। If you don't want to surrender, if you don't decide to surrender to Krishna, then nobody can help you. अगर आप शरणागत सेवा करने के लिए इस निर्णय नहीं करते हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर Only सकता। Maya will put chain around your neck and drag you. माया आपके गले में जंजीर बांध के आपको घसीट के ले जाएगी। All right? ठीक है, Thank you. Thank you. धन्यवाद। How did you come here? आप यहाँ आए कैसे? It's totally coincidental. It's a coincidence, right? I have only 1 month for my exam, biggest exam of my life, and I was very frustrated that why should I study, that what do I want for my life, and I visit Mayapur last today, and my old friend Shyam Sundar Das, I met him again coincidentally, and he gave me advice to attend this session. So, Not only session, also kirtan. It's my first time, my life first experience to experience the kirtan, and I feel very joy. And I don't know how I was in my room and studying hard and grinding hard, and now I'm here. and relaxing. I'm just relaxing, and I have a very much pressure on my head, and now I'm very clear that Krishna wants to do this thing by me, but I cannot surrender 100%. But I was thinking that I am doing my thing, but I was not doing my thing. That he wants to do these things by me, that I am getting this point. So when is the exam? It's 10 June. June? Yeah. Okay. Krishna will give you good intelligence. I think he already gave me enough intelligence. That's true. That's really true. बिल्कुल सही बात बता रहे हो। वो कह रहे हैं मेरा कुछ दिनों में एग्जाम है और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। मैं जीवन में समझने का प्रयास कर रहा था, मुझे जीवन में क्या करना है, बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था मैं अपने घर में बैठ के। लेकिन मैं यहाँ आया मायापुर धाम में और श्याम प्रभु से मिला, जो मेरे पुराने दोस्त हैं। उन्होंने मुझे कीर्तन के लिए बुलाया, मुझे बहुत ही आनंद आया कीर्तन में आके। मेरे जीवन में मैंने पहला कीर्तन सुना और मुझे समझ में आ रहा है कि कृष्ण मुझसे कुछ चीज़ें चाहते हैं, लेकिन मैं 100% शरणागत होकर नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं सोच रहा था मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आके समझ में आ रहा है कि मुझे और प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं 100% शरणागत नहीं कर पा रहा हूँ। So this is really interesting because we're discussing the point, right? But here's like a practical example for us to understand, right? हम जिस बात पे यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यहाँ बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है हमारे सामने। हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं, Because Krishna knows, oh, this person wants to understand me. He wants to know what is my duty. क्योंकि कृष्णा को पता है ये व्यक्ति मुझे समझने का प्रयास कर रहा है, ये जानने का प्रयास कर रहा है कि मेरा कर्तव्य क्या है। And he's praying to Krishna, please tell me. और वो कृष्णा से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्णा मुझे बताइए, But he's not able to hear it. लेकिन वो उसको सुन नहीं पा रहे हैं। So Krishna just sends him here तो कृष्णा उनको यहाँ भेजते हैं to be able to hear that message. ताकि वो इस संदेश को सुन पाए। So that's why it says that, okay, who should I hear from? तो इसीलिए ये सवाल पूछा गया हमें किनसे सुनना चाहिए। Right? Well, Krishna will make the arrangement. ये व्यवस्था कृष्ण बनाएंगे। Somehow or other, the guru will come to you, किसी तरह से वो गुरु आपके पास आएंगे or you'll go to that या फिर guru, आप उस गुरु के पास आएंगे and you won't even know और आपको पता भी नहीं until होगा you start hearing that message. जब तक आप उनसे वो संदेश सुनना शुरू नहीं करेंगे।
And then if that really coming from Krishna, Krishna will wake up your soul. अगर वो असल में कृष्ण से आ रहा होगा तो कृष्ण आपकी आत्मा को And जगा he'll देंगे give you intelligence and faith to understand, oh, this is not ordinary meeting. और वो बुद्धि देंगे, श्रद्धा देंगे समझ पाने के लिए कोई सामान्य मुलाकात नहीं हो रही है। Just like when Srila Prabhupada met his spiritual master. जैसे श्रील प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले थे, Even he didn't want to go to meet Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. यहाँ तक कि वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलना तक नहीं चाहते थे, Because he also had some negative and unimpressive meetings with so-called sadhus and gurus. क्योंकि उनको भी बहुत सारे नकारात्मक कोई प्रभाव नहीं करने वाला साधुओं गुरुओं से, नाम मात्र गुरुओं से मुलाकात होकर कोई प्रभाव नहीं दिखा। But because his friend wanted to know, I want you to meet this guru, so you tell me what you think about this guru. और क्योंकि उनके मित्र उनसे पूछना चाहते थे कि आप इन गुरु से मिलिए ताकि आप बताइए कि आप इन गुरु के बारे में क्या सोचते हैं। So Prabhupada said, because I was like a leader amongst my friends, everybody was wanting to know what do I think, what is my realization. प्रभुपाद बता रहे थे क्योंकि मैं अपने दोस्तों के बीच में एक नेता की तरह था, तो लोग मेरे से मेरा विचार जानना चाहते थे, मेरे क्या विचार है, So Srila Prabhupada said he just went on behalf of his friend so that he could give his friend some opinion about the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. तो श्रील प्रभुपाद अपने दोस्त की तरफ से गए थे ताकि वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में उनके ख्याल अपने दोस्त को बता सके, Otherwise Prabhupada would not even have gone there. वरना प्रभुपाद वहाँ जाते भी नहीं। So he understood this is by divine providence. तो वो समझ पाए ये कोई विधि के विधान से हुआ है, That under some other kind of a plea, I was able to go and meet Bhaktisiddhanta Saraswati. कि किसी और के निवेदन से मैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिल पाया। And then when he started to hear him and understand, then immediately he could understand this is Mahaprabhu's parampara. और जब वो उनके वो सुन पाए, उनकी बातें समझ पाए, तब वो समझ पाए ये है महाप्रभु के Here परंपरा। is that personality who can represent this disciplic succession of the Lord. ये वो व्यक्ति है जो भगवान के परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। So it was to his surprise, तो उनको आश्चर्य मिला बहुत बड़ा, because he didn't expect that type of experience. क्योंकि उन्होंने उनके इस तरह के अनुभव की उन्हें अपेक्षा नहीं की थी। And then he understood, oh, this is Satguru, this is Shri Guru, और तब वो समझ पाए, directly there. ये सतगुरु श्री गुरु सीधे सीधे यहाँ प्रकट हो रहे हैं। And then Krishna will give you intelligence and faith. और कृष्ण आपको बुद्धि देंगे, श्रद्धा देंगे। Prabhupada said that Paramatma Chaitya Guru will dictate to you. प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण परमात्मा चैत्य गुरु आपको You बुद्धि should देंगे। accept this person as your guru. आप इन व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए। Krishna, Paramatma will directly tell you. कृष्ण परमात्मा आपको सीधे सीधे बताएंगे। That's really Krishna's arrangement. वो है असल में कृष्ण की That's व्यवस्था। really Guru वो Tattva. है असल में गुरु तत्व। Otherwise, ISKCON, they just say, oh, you're devotee 6 months, 1 year, pick some guru. मैं ISKCON में कहते हैं आप 6 महीने 1 साल के हो चुके हैं, आप गुरु चुनिए। And you're like, oh, okay, this Maharaj, that Maharaj, right? Like this. अब कहते हैं ओ ये महाराज वो महाराज ऐसे। Well, okay, in this temple, this Maharaj is in charge here. Okay, I'll accept him as my guru. इस मंदिर में ये महाराज इंचार्ज है, तो मुझे इनको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। So there's no training to understand how to understand Krishna's arrangement, who is your guru. तो कोई प्रशिक्षण नहीं है ये समझाने के लिए कि आप कैसे समझ सकते हैं कृष्ण आपको बताएंगे कौन है आपके गुरु। It's not that we pick the guru. हम गुरु का चुनाव नहीं करते। It's that Krishna selects who is your guru. कृष्ण चुनाव करते हैं कौन है आपके गुरु। So we have to depend on Krishna. तो हमें कृष्ण के ऊपर आश्रित होना होगा। To get intelligence and faith from Krishna. बुद्धि और शक्ति श्रद्धा हम कृष्ण से प्राप्त करें। Otherwise, we cannot understand the Guru Tattva. वरना हम गुरु तत्व नहीं समझ सकते। Paramatma Tattva means Guru Tattva. परमात्मा तत्व मतलब गुरु तत्व। If you don't know Krishna in the heart, you don't know then how you'll understand when he comes out of the heart. जब अपने हृदय में आप कृष्ण को समझ नहीं पा रहे हैं, तो जब वो बाहर आएंगे तो आप उनको क्या समझ पाएंगे। So you see how important is book distribution. तो आप देखिए ये किताबें बांटना कितना महत्वपूर्ण है। You see, because if we're not out there and we're not allowing Krishna to send certain souls, then how they'll come to hear this message? क्योंकि हम बाहर जाएंगे नहीं तो कैसे कृष्ण ये व्यवस्था बनाएंगे कि उन आत्माओं को यहाँ तक भेज सके और हम ये संदेश का प्रचार कर सकें। All of us became devoted because of Srila Prabhupada's books. हम सभी भक्त बने श्रील प्रभुपाद की किताबों की वजह से। We read that book immediately, so okay, this is absolute truth. हमने वो किताब पढ़ी, हमने तुरंत कहा ये है परम सत्य। And Srila Prabhupada is Premi Bhakta और Mahabhagavata. श्रील प्रभुपाद प्रेमी भक्त है, महाभागवत। And just because of that we came. और इसी कारण से हम सब आए। And then that Krishna Prasadam. और फिर कृष्ण प्रसाद की वजह Come से। on. Prasadam made everybody devotee. प्रसाद ने सबको भक्त बनाया है।
Krishna brought, prasadam convinced. कृष्णा हमें लेकर आए, प्रसाद ने हमें आश्वस्त किया। Nice combination, isn't बहुत it? अच्छा मेल है ना? Do you have prasadam? प्रसाद है आपके पास? Do you have cookies? कुकीज है आपके पास? Where are you, man? अब है कहाँ? What are you thinking about? Your wife? किसके बारे में सोच रहे हैं? अपनी पत्नी के बारे He's में? worrying about his wife. अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हैं। That's all he's thinking about. यही सोचते रहते He हैं। didn't hear one word I said. He has a cookie stuck in each ear, man. You know? He एक could not शब्द hear anything. एक शब्द मेरी बात नहीं सुन पा रहे, दोनों कानों में कुकी चिपका कर। He's got dough. He's got the dough in his ear. वो आटा लगा के कान पे डाल कर रखा है। This guy's massaging his ear. और ये व्यक्ति अपने कानों को मसाज करता रहता है। This guy wondered, how am I going to hear once you leave? He doesn't even know how to hear when we're here. ये चिंता कर रहा है जब आप चले जाएंगे तो हम क्या सुनेंगे? अभी तो ये समझ में नहीं आया, अभी मैं रहो के कैसे सुन पाऊंगा? I couldn't hear anything because I was worried, what am I going to hear when you leave, you know? मैं कुछ भी सुन नहीं पाया क्योंकि मैं चिंता कर रहा था जब आप चले जाएंगे तब मैं कैसे सुनूंगा? Krishna, please help us, Krishna. कृष्णा हमारी मदद कीजिए। So what else? और क्या? Nothing. He's already got all his intelligence back, इनके सारे बुद्धि अब वापस आ चुकी है, right? है नहीं? And the first night, imagine on the first night, his first kirtan also? कल्पना कीजिए पहली रात पहला कीर्तन इनका, Just imagine now. थोड़ी कल्पना कीजिए First kirtan and first class. पहला कीर्तन और इनका पहला क्लास, Because Krishna knows, he really sincerely wants to understand. क्योंकि कृष्णा जानते हैं एक निष्ठता से गंभीरता से जानने का प्रयास कर And रहे हैं Krishna made arrangements. और कृष्णा ने व्यवस्था He बनाई said, है। just by some coincidence I came और here. वो कह रहे कि संयोग से मैं यहाँ आया, Of course, for Krishna, not a blade of grass moves without the will of the Lord. और अवश्य भगवान की मर्जी के बगैर एक तिनका भी नहीं होगा, So it's really Krishna's और arrangement. ये असल में कृष्णा की व्यवस्था है। I remember I prayed to Krishna when I met my Guru there, मुझे याद है मैंने कृष्णा से प्रार्थना की जब मैं अपने गुरुदेव से मिला, Srila Gaur Govinda श्री Swami. गौर गोविंद स्वामी। And I prayed to Krishna. I said, Krishna, is this person is my Guru? और मैंने कृष्णा से प्रार्थना किया, क्या कृष्णा क्या ये व्यक्ति मेरे गुरु हैं? Please give me 108% confirmation. मुझे 108% आत्मविश्वास दीजिए। Please give me intelligence and faith to understand. Is this your arrangement? I'm supposed to accept him as my Guru? मुझे बुद्धि दीजिए, श्रद्धा दीजिए, क्या ये आपकी व्यवस्था है? मुझे इन व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, Because I didn't go there to get a Guru. क्योंकि मैं वहाँ गुरु पाने के लिए नहीं गया था, I wasn't looking for a Guru. मैं गुरु को ढूंढ तक नहीं रहा था। So I was pleasantly surprised तो मैं बहुत अच्छा मुझे आश्चर्य मिला, because I could understand this is some Krishna making some arrangement. क्योंकि मैं समझ पाया कृष्णा कोई व्यवस्था बना रहा है। Then when I asked Krishna, is this really, should I accept him as my Guru? तब मैंने कृष्णा से पूछा क्या मुझे इनको गुरु के रूप में स्वीकार Please करना give me चाहिए? intelligence and faith. मुझे बुद्धि दीजिए, Either श्रद्धा way. दीजिए, एक या दूसरी Either तरीके yes से, or no. या तो हाँ या तो ना। And then my spiritual master, he said, I know my words are pinching you, और फिर मेरे गुरुदेव ने कहा कि मुझे पता है मेरे शब्द आपको चुभ रहे हैं, but I am not your enemy, Murali. लेकिन मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ मुरली। Do you understand? क्या तुम समझ पा रहे हो? He said, I have come here for you. मैं कहा मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, Won't you help me? क्या Won't you cooperate with me? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मेरे So I सहयोग was नहीं like, करोगे? oh, Krishna. कृष्ण He's telling, I'm your well-wisher and I have come here for वो you. मुझे कह रहे हैं मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ और मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, Won't you help me? क्या आप मेरी मदद नहीं Won't you करेंगे? help me to help you? क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे ताकि मैं आपकी Then मदद कर immediately I understood, oh, this is really my Guru. सकूं? तब मैं तुरंत ये समझ गया ये This है is मेरा Shri Guru, सद्गुरु, Satguru. श्री गुरु सद्गुरु, Janmi Janmi Prabhu sir. जन्मे जन्मे प्रभु से। Immediately I surrendered to him. तुरंत ही मैंने उनको शरणागत Once कर I दिया। had got that intelligence or faith, immediately I accepted it. एक बार जब मुझे वो बुद्धि श्रद्धा मिली तुरंत ही मैंने शरणागत कर दिया। And then next day Maharaj said, you have accepted me in your heart, I have accepted you in my heart. और अगले दिन महाराज ने कहा आपने मुझे अपने हृदय में स्वीकार किया है, मैंने आपको अपने हृदय में And स्वीकार Krishna किया wants है। और this. कृष्ण ये चाहते And हैं it will और happen. ये होगा, Just be patient. केवल थोड़ा धैर्य रखिए। And really those words were 100% true. और वो शब्द 100% सत्य थे। Absolutely true. और हम- Absolutely correct. सत्य बिल्कुल सही थे।
So you see how important it is, book distribution? तो आप देखिए ये किताबें बांटना कितना महत्वपूर्ण है। So we have to be in the right तो consciousness हमें सही चेतना में रहना होगा in order to do that seva, because you're mixing with the public. ये सेवा करने के लिए, क्योंकि आप सामान्य जनता से मिलते So जुलते the हैं public is all contaminated persons, contaminated और consciousness. सामान्य जनता बहुत दूषित है, दूषित परिवेश में है। Everybody's carrying their own Himalayan mountains of sinful reactions. सभी अपने अपने हिमालय पर्वत जैसे पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं को लेकर घूम रहे हैं। So we have to be protected and prepared when you actually meet with the public. तो आपको अपने आप को रक्षा करनी होगी और जब सामान्य जनता से आप मिल रहे We हैं have to be in the right consciousness. आपको चेतना सही रखनी होगी, Then Krishna will protect you तब कृष्ण आपकी रक्षा and करेंगे, he'll keep you in a purified state of mind and आपको consciousness. शुद्ध मन और चेतना में रखेंगे। Then when those other conditioned souls come up to you, और जो अन्य बद्ध जीव आपके पास then you'll be आएंगे in a position to try to hand them Krishna's mercy, Prabhupada's mercy. तो आप ऐसी स्थिति में रह पाएंगे कि आप प्रभुपाद और कृष्ण की कृपा उन लोगों को दे पाएंगे। And even Prabhupada said, what will your preaching do? और यहाँ तक कि प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि आपका प्रचार क्या करेगा, Even if they read one line of my book, अगर मेरी किताब का एक पंक्ति भी वो पढ़ लेते हैं they can become pure तो devotees. वो शुद्ध भक्त बन सकते हैं। That's how powerful Srila ये Prabhupada. है श्रील प्रभुपाद की शक्ति, That's how powerful Premi Bhakti is. ये है Even प्रेम just भक्ति की one शक्ति। line, केवल एक पंक्ति भी, one kirtan, एक कीर्तन that can completely, immediately purify you. तुरंत पूरी तरह आपको शुद्ध बना सकता है। So that empowerment is required. तो वो सशक्तिकरण जरूरी है, Otherwise, there's no real effect. वरना कोई असल प्रभाव नहीं दिखेगा, It will not change anything. कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। Make sense? क्या आप समझ पाए? Can I add something? You can ask whatever you want. You're getting all the mercy tonight. We're just happy to be part of it, you know. आप जो चाहे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको सारी कृपा मिल रही है और हम कहीं कहीं उसमें भाग हैं बस। I just want to tell my story. 6 months ago, I joined a meditation class and Join what? Meditation class. Messaging? मेडिटेशन, Meditation. meditation class. That's now we're getting into the details, how you're looking for Krishna in the heart. तो पहले अब हम ये डिटेल में जा रहे हैं कैसे अपने हृदय में भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। 6 महीने पहले इन्होंने एक मेडिटेशन क्लास ज्वाइन किया And where I met an Italian guy and You met an Italian guy? हाँ, एक इटालियन व्यक्ति से This मिले। guy? इनसे मिले आप? no, Oh, Nico, I was going to give you some credit, you know. मैं आपको कुछ श्रेय देने वाला था। He's taking for all of Italy. He'll take that credit. वो सारी इटली का श्रेय उनको ही दिया जाएगा। He's a representative of Italy right now. इटली के प्रतिनिधि हैं यहाँ हमारे, Indirectly. दूसरे तरीके से। Directly parampara. Yeah. He's representing that region. उस क्षेत्र की वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। He's the GBC. I made him the GBC. I made him the GBC of Italy. मैंने इस इटली का जीवित Just बनाया। today. Just today. Haribo! Haribo! Nice. We have GBC of Italy. अब हमारे पास इटली का जीवित है। Now we have to take over the whole country. अब बस पूरे देश पे राज करना है। and he was another guy and Where was he from? he from Italy. Delhi? इटली, इटली। Delhi, okay. And from 1 year I am trying to be fluent in English, so that's why I am trying to speak with foreigners to be fluent. You're trying to what? He wanted to improve his English speaking, so he was talking with foreigners to improve his English. Krishna was preparing you so you could hear from me. कृष्णा आपको पहले से बता रहे हैं, मैं विदेशी लोगों से बातचीत कर रहा था अपने अंग्रेजी बढ़ाने के लिए, तो गुरुदेव बता रहे हैं कृष्णा आपको तैयार करे थे ताकि आप यहाँ के मुझसे सुन पाएंगे। Because Krishna knows he's going to give you the message in English. So he कृष्णा had को to पता था हमारी prepare संदेश you. आपको अंग्रेजी में देने वाला है, तो आपको तैयार कर रहे थे। And after talking with this Italian person, I get some confidence and I'm trying to find some foreigners to talk. Later on, I discovered that there are many foreigners in Mayapur, so I should visit there. And I come alone from my house, 72 kilometers from away, and I spend my whole day here and meet many person and also him. He is connected with me. He's from France.
He's from France. He's the GBC for France. तो ये है फ्रांस की GBC अब। And, when I come here, I This is feel- the real United Nations, you know. ये असल संयुक्त राष्ट्र। and I am also, I think. Yeah, you're representing India. Yeah. You're not GBC level yet, though. You know? आप भारत के प्रतिनिधि अभी तक आप GBC में नहीं आए। So I am continuing. So after coming here, I meet with the priest of Prabhupada, and he advised me to read Bhagavad Gita, and I bought a book, I mean to say Bhagavad Gita, and try to read and try to understand what the concepts are. So I learned something new, I know something new things, and that's blow my mind. That what I just want to say that I am very lucky to read this Bhagavad Gita in this previous age. Yeah, And he is very lucky. still I have बहुत not भाग्यवान। finished yet, and there is many things to read, and What was the last part? He's saying he has not finished reading Srimad Bhagavad Gita. There are many more things yet to come. He's hoping. and it's okay, but now it's totally coincidentally that I am here. That last day I took this decision within 5 minutes that I will go Mayapur, and now I am here. What was it? Last part? Last day, just 5 minutes. In a 5-minute, he made a plan that he should go to Mayapur yesterday, and he just came to Mayapur. Where was he? In Calcutta? Yeah. Uh-huh. So somebody told you to come to Mayapur? No, not somebody. It's from my inner state. My mind told me I should Krishna go. told you. गुरु ने कहा मुझे किसी तरह से प्रेरणा मिली कि मुझे मायापुर आना चाहिए। तो गुरुदेव बता रहे That's why कृष्ण ने आपको Krishna is somebody. ये He's the कृष्ण ही best है। body. वो कोई जो है वो कृष्णा ही है, वो सबसे श्रेष्ठ कोई है। He told you to come there. उन्होंने आपको यहाँ आने के लिए बताया। Yes, and now I am here with the in front of Maybe. you. Maybe. Not maybe, totally. तो कह रहे अभी मैं यहाँ हूँ, गुरुदेव कह रहे हो सकता है, नहीं हो सकता नहीं, मैं पूरी तरह से यही हूँ। But the thing is, there is many things to know in this whole universe that which is not in our senses even. But we can gather these types of knowledge by reading these types of books and hearing these types of persons here. Yeah. And I got much more interest as compared to my study books than Bhagavad Gita. And Do whenever, you like this information better? yes, तो कह रहे हैं मुझे अपनी बाकी किताबों से भगवद गीता पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गुरुदेव बता रहे हैं आपको ये जानकारी ज़्यादा अच्छी लग रही है। and my That's why we're all here. You're telling all of our stories. इसीलिए हम सभी भी यहाँ हैं, अब हम सभी की कहानी ही सुना रहे हैं। and my parents getting afraid that His parents are becoming afraid now. Of course. कह रहे मुझे माता पिता का डर लग रहा है, तो मुझे बता रहे हैं जरूर डर लगेगा। That's normal. ये बहुत सामान्य बात है। You can expect that. आप बिल्कुल उसकी उम्मीद लगा के बैठिए। They're getting nervous, right? तो उनको वो थोड़ा सहम रहे हैं हम। and they getting they got tension that maybe I can be a monk or something like that. Your parents are very intelligent. मेरे माता पिता को लगता है कि मैं कोई साधु बन जाऊंगा। तो गुरुदेव बता रहे हैं आपके माता पिता बहुत बुद्धिमान हैं। Krishna is telling them also. कृष्णा उनको भी बता रहे हैं। Just they saw many tough time in their life, and they want for me to be established in my life. And I have a small brother. He is in class 9, so I have some responsibility to take. So it's needed to be financially stable in my life. So maybe that's why they are thinking this types of things. Yeah, it's natural. They're naturally thinking. तो कह रहे हैं उनके माता पिता अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है और बड़े बेटे उनके छोटे भाई भी हैं, तो चाहते हैं कुछ आर्थिक रूप से स्थिर हो जाएं। तो गुरुदेव बता रहे हैं ये स्वाभाविक चिंता है जो परिवार में होती है। Krishna will help them. कृष्णा उनकी मदद करेंगे। He'll help you gradually to understand what to do, how to do. वो धीरे धीरे आपको मदद करेंगे कैसे समझने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना How है, to take responsibility in many different ways. कैसे जिम्मेदारी उठानी है अलग अलग तरीकों से। But first you have to become spiritually strong. लेकिन सबसे पहले आपको आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होना होगा, Otherwise you cannot help anybody. वरना आप किसी की मदद नहीं कर सकते। If we don't help ourselves first spiritually,
We cannot help anybody. अगर हम खुद की मदद पहले आध्यात्मिक रूप से नहीं कर पा रहे, हम किसी और की क्या मदद करेंगे? We're useless to ourselves, then how we're going to be useful to somebody else? अगर हम खुद के लिए बेकार हैं, हम किसी और के लिए क्या लाभ कर सकते हैं? So I told my family, I'm investing in my spiritual life, and when I become strong, I get some benefit, then I'll try to help you. मैंने अपने परिवार को बताया, मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में निवेश कर रहा हूँ, और जब मैं आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हो जाऊंगा, तब मैं आपको भी मदद करूंगा। Otherwise, I cannot help myself, I cannot help you. वरना मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, मैं आपकी क्या मदद करूंगा? So just do one thing first, and then you'll be stronger, and then you'll be able to handle all responsibilities. तो पहले एक बार में एक कदम उठाइए और ज़्यादा शक्तिशाली बनिए, आप तब बाकी जिम्मेदारी उठाने के लिए शक्तिशाली हो पाएंगे। Don't worry, Krishna will gradually make everything clear. What's the best way for you to move forward? चिंता मत कीजिए, कृष्णा धीरे-धीरे सारी चीजें साफ करते जाएंगे, क्या आपके लिए सबसे श्रेष्ठ चीज होगा करने के लिए। I can connect the dots, the journey. Huh? He's saying he can connect all the dots of his journey, how he came. Yes, you connected them for us as well. तो कह रहे हैं मैं सारे बिंदुओं को जोड़ पा रहा हूँ, कैसे अपनी यात्रा में मैं यहाँ तक पहुँचा। तो गुरुदेव बता रहे हैं आप हमारे लिए भी सारे बिंदुओं को जोड़ रहे हैं। It's very interesting, your sincere desire to understand, then how Krishna is helping you. तो ये बहुत ही दिलचस्प है देखने में, आपकी एकनिष्ठ इच्छा कृष्ण को समझने की, और कृष्ण कैसे आपकी यहाँ मदद कर रहे हैं। So it's no तो coincidence. ये कोई संयोग नहीं है, Because Krishna knows what are you thinking. क्योंकि कृष्ण को पता है आप क्या सोच रहे He हैं। knows what is your desire, your spiritual वो desire. जानते हैं आपकी आध्यात्मिक इच्छा क्या है, So He's helping you. तो वो आपकी मदद कर रहे हैं। You solve your spiritual problem first, and everything else will be solved. आप अपने पहले आध्यात्मिक समस्या का समाधान कीजिए, सारी अन्य चीजें अपने आप समाधान हो You try जाएंगी। to solve all your material problems first, and then you'll surrender to Krishna. That day will never come. आप अपनी सारी भौतिक समस्याओं को पहले समाधान करके फिर कृष्ण को शरणागत करने के लिए आएंगे, ये दिन कभी नहीं आने वाला। We have a fundamental spiritual disease. हमारी मूलभूत आध्यात्मिक बीमारी है, If we don't solve that, we can solve no other part of our life properly. अगर हम उसका समाधान नहीं कर सकते, जीवन में किसी भी अन्य भाग का हम समाधान नहीं करने So वाले। this is really priority. This is Sanatan Dharma, ये असल प्राथमिकता है, ये है सनातन धर्म, not the man-made Dharma, मानव निर्मित धर्म नहीं। not Maya. What is it? The mind, Manu Dharma, मनोधर्म, right? Manu Dharma. मनोधर्म नहीं, So Sanatan Dharma. सनातन धर्म, That means the Dharma of the soul, यानी कि आत्मा का धर्म, the duty of the soul. आत्मा का कर्तव्य, That's bhakti, वो है भक्ति, Krishna bhakti. कृष्ण भक्ति। So we're doing that Sanatan Dharma. तो हम वो सनातन धर्म कर रहे हैं, And then when you become spiritually strong, then you can handle different other responsibilities as well on behalf of that Sanatan Dharma. और जब आप आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हो जाएंगे, तब आप बाकी अन्य जिम्मेदारियों को सनातन धर्म के आधार पर पूरा कर पाएंगे। But if we don't solve the spiritual problem, we cannot help anybody, लेकिन हम अपने आध्यात्मिक समस्या का समाधान नहीं कर पाए, हम किसी की मदद नहीं कर सकते, spiritually or ना materially, आध्यात्मिक रूप से ना भौतिक रूप से, because nobody will be peaceful and happy. क्योंकि कोई शांत और सुखी नहीं रहने वाला, Because we'll not be peaceful and कि happy. हम शांत सुखी नहीं रहने वाले। So every material world is complete anxiety. भौतिक जगत में सभी लोग पूरी तरह से चिंता में, No peace. कोई शांति नहीं, No peace means no happiness. कोई शांति नहीं मतलब कोई सुख नहीं। So if you have no peace and no happiness, how can you help anybody? आपके पास कोई शांति नहीं, कोई सुख नहीं, किसी और की क्या मदद करने वाले हैं? Just throwing money at them is not going to really help them. उनके ऊपर पैसे फेंक के आप उनकी मदद नहीं कर सकते। You have money and you're not peaceful and happy. आपके पास पैसे हैं, आप खुद शांत सुखी नहीं हैं। Maybe not you, हो सकता है आप नहीं, because you're just young men starting out. क्योंकि आप अभी जवान व्यक्ति हैं और अभी शुरुआत कर रहे हैं जीवन की। So solve the spiritual thing first of तो all. पहले आध्यात्मिक समाधान कीजिए पहला, Then other thing, that's easy. और बाकी चीजें आसान हैं। It's very difficult to understand that because we think materially everything is so complicated. ये लेकिन समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम सोचते हैं अभी भौतिक रूप से हम सोचते हैं, And without Krishna, it's impossible और कृष्णा के बिना यह करना असंभव है to figure out and to manage. कि सारी चीजों को पता लगाना, व्यवस्थित करना। It says to try to manage your family life in the Kali Yuga is more difficult than managing British Empire. बताया जाता है कलयुग में केवल अपना परिवार चलाना ब्रिटिश साम्राज्य चलाने से भी ज्यादा मुश्किल है, That's how complicated it is. इतना जटिल हो चुका है। So without spiritual strength and spiritual intelligence, how will manage anything? तो बिना आध्यात्मिक शक्ति के, आध्यात्मिक बुद्धि के हम कैसे सारी व्यवस्था चला सकते हैं, And how long will it last? और कितना लंबा चलेगा? All right? ठीक है। Yes,
You're a very simple-hearted person. आप बहुत सरल हृदय वाले व्यक्ति हैं। So I can understand why Krishna is helping you. मैं समझ पा रहा हूँ कैसे क्यों कृष्ण आपकी मदद कर रहे हैं। Because you have some simplicity. क्योंकि You आपके have अंदर some कुछ simplicity qualities. सरलता के गुण हैं। That's very, very helpful. ये बहुत ही मददगार होता है। So that's why Krishna is helping you. इसीलिए कृष्ण आपकी मदद कर रहे हैं। So welcome to our spiritual family. तो हमारे आध्यात्मिक परिवार में आपका स्वागत है। He's trying to also fit in, you know. ये खुद उसमें घुसने का प्रयास कर रहे हैं। He doesn't know if he's from Scotland or Ireland or England. उनको पता नहीं वो स्कॉटलैंड से हैं, आयरलैंड से हैं कि इंग्लैंड से हैं। I told him potato. मैंने इनको एक बार कहा था आलू। Just inside joke. ये हमारा भीतरी मजाक है। So thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। We're very happy to be with you. हम बहुत खुश हैं आपके साथ। Thank you. We all, if you ask all devotees, most devotees, we have very similar type of stories. अब ज़्यादातर भक्तों से आप पूछिएगा सभी के पास एक जैसी ही कहानी है। In India, it's a little different because they see ISKCON and they think, okay, we can go to West, we can get money, right? So it's a little bit of a different motivation, maybe not so devotional. तो भारत में थोड़ी अलग कहानी है। लोग कहते हैं ISKCON मतलब विदेश जाने का रास्ता, पैसा कमाने का रास्ता। तो यहाँ थोड़ी अलग सोच है, विचारधारा है। International society. अंतर्राष्ट्रीय संघ है। You can get out of the village. अब हम गांव से बाहर निकल सकते हैं। Right? You maybe get a good job, make some money, go to the West. अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पैसे कमाएंगे, विदेश जा पाएंगे। But for us, we're running away from the West. और हमारे लिए तो हम विदेश से भाग के यहाँ हैं। And we're running to India to understand about the spiritual life. और हम भारत भाग कर आए आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए। So definitely we came here for a spiritual purpose. तो निश्चित रूप से हम यहाँ आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए आए हैं। We're giving up everything else to come here. हम वहाँ सब कुछ छोड़ कर आए हैं यहाँ आने के लिए। And it's a big thing. Yeah, definitely. कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव बता रहे हैं निश्चित ही बहुत बड़ी बात है। To give up your country and your culture and your family and your job and your money and everything, it's not easy. अपना देश छोड़ना, अपना परिवार छोड़ना, अपनी संस्कृति, अपनी नौकरी, अपना कारोबार सब कुछ छोड़कर आना आसान बात नहीं है। That's why this is not a child's play. इसलिए कहते हैं ये बच्चों का खेल नहीं है। This is a life and death situation. ये जन्म और मृत्यु की स्थिति है। So we're happy that you joined with us. तो हमें बहुत खुशी है आप हमारे साथ जुड़े हैं। And all devotees will try to help you as best that we can. और हम सारे भक्त जितना श्रेष्ठ हो सके आपकी मदद करने Keep का प्रयास praying to करेंगे। Krishna. आप कृष्णा से प्रार्थना He's करते already रहिए। helping you. Keep कृष्णा पहले से praying. आपकी मदद कर रहे हैं। कृष्णा से Doesn't mean प्रार्थना okay करते now you came, that's it. No, you keep praying. You keep crying to रहिए। Krishna. ऐसा नहीं आप यहाँ आ गए हो गया। आप कृष्णा से प्रार्थना करते रहिए, मदद मांगते रहिए। This is just beginning ये शुरुआत है of the spiritual life. आध्यात्मिक जीवन की। Now we have to go through whole process. अब हमें पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। All right? ठीक है? Thank you. धन्यवाद। Hare Krishna. Hare Krishna. Deva. देवा, Yes, please say. कृपया बोलिए। You came before, आप right? पहले भी आए हैं ना? I remember you, मुझे man. याद है आप। Wasn't I asking you about the guru or something? क्या मैं आपको गुरु के बारे में पूछ रहा था? Yes. Huh? So, Hari Krishna Guruji. Politician. Right. Hari Krishna Hari and Krishna. Hari Krishna everyone. I'm the same politician. I'm the same politician. Yes, but you're a more happy politician. अब आप बोले मैं पहले वाला ही राजनीति हूँ, राजनीतिज्ञ हूँ। गुरुदेव बता रहे हैं अब आप ज़्यादा खुश राजनीतिज्ञ हैं। You can say that. आप कह सकते हैं। So, the thing is, I'm a child and I am ignorant of the fact about body, mind and senses. And I want to break the mountain You want to break the mountain? because I'm papi. You know. need Elon Musk. वो कह रहे हैं मैं भी शरीर मन के बारे में चिंता करता था और मैं इस पर्वत के अंदर फंसा हूँ गुरुदेव, और मैं इस पर्वत को तोड़ना चाहता हूँ। गुरुदेव बता रहे हैं आपको इलॉन मस्क की जरूरत है। You need a bunker buster. आपको जो है बंकर को उड़ाने वाला कुछ चीजें चाहिए। What mountain are you trying to bust through? कौन से आप पहाड़ को उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं? Pap, as you said, I am a papi. So, Sinful। Simple, I'm yeah. a sinful guy.
Oh. So I Because want you're a to. politician. क्योंकि हम राजनीति करते हैं, That's what politicians do. तो राजनीतिक लोग यही करते हैं, पास करते हैं। Sometimes they tell the truth. But you want to be a good politician, लेकिन right? आप एक अच्छे राजनेता बनना चाहते हैं ना? That let the people decide that. Huh? Let the people decide that whether I'm good or bad. Let the people decide if I'm good or bad. No, you decide if you're good or नहीं, bad. आप निर्णय कीजिए कि आप अच्छे होंगे या बुरे बनेंगे। So even that's why I'm asking you a question. I know. Yes. इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे बता रहे, मुझे पता है। So you said Krishna is the controller of our body, mind, and senses Yeah, because everything is controlled by Krishna. yeah. So why even then in Gita or Krishna has said that a person should have full authority over their body, mind and senses, physically, mentally and spiritually. So what's the authority we are having within ourselves? So how we can master our senses and put it towards, again you said, towards Krishna. So this is a big thing I want to understand. I'm curious about it. So That's a very good question for a politician. एक राजनेता के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्रभु सवाल पूछ रहे हैं कि आपने बताया कि कृष्णा जो है शरीर, मन और बुद्धि के और सभी चीज़ों के वो इंद्रियों के नियंत्रण करता है। तो और गीता में ये भी बताया गया कि आपके अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को ऐसे नियंत्रित करना है और उसे पूर्ण तरीके से कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करना है। तो इसमें हमारा भाग क्या है, ये मैं समझना चाहता हूँ, तो कैसे हम इसमें अपना काम करें। तो गुरुदेव बता रहे हैं एक राजनेता के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये। So it's explained that only thing a soul can do is desire. तो बताया जाता है आत्मा केवल एक कार्य कर सकती है, इच्छा करना। So then it's a question of what is the desire? और तब सवाल बस एक होता है, इच्छा क्या है? Is it spiritual or is it material? क्या ये आध्यात्मिक है या भौतिक? how a soul can desire? Hmm? How a soul can desire? Someone has to tell me whatever you say. He's saying how the soul can desire. How can this, because soul is a person, क्योंकि वो पूछ रहे हैं आत्मा कैसे इच्छा कर सकती है। गुरुदेव बता रहे हैं आत्मा एक व्यक्ति है। so we are eternal servants of the Lord, means we're eternal personalities. The soul is eternal personality. Krishna is also eternal personality, but he's supreme personality. तो आत्मा जो है कृष्णा का नित्य दास है, यानी कि एक नित्य व्यक्ति है और कृष्णा भी एक नित्य व्यक्ति है। हम भी नित्य व्यक्ति हैं, कृष्णा भी नित्य व्यक्ति है, लेकिन कृष्णा परम व्यक्ति है, परम पुरुष है। So the conscious soul can desire. तो जो जागृत चेतन आत्मा है वो इच्छा कर सकती है। And we have minute independence to choose. और हमारे पास बहुत छोटी सी आज़ादी है एक निर्णय करने की। Krishna has made the living entity to be a type of controller, तो कृष्णा ने जीवात्माओं को एक तरह का एक नियंत्रणकर्ता बनाया है। but our control is dependent on the supreme controller's power and intelligence. लेकिन हमारा नियंत्रण Otherwise we cannot control anything. हमारा नियंत्रण परम नियंत्रणकर्ता की बुद्धि और उनके ऊपर निर्भरता के ऊपर निर्भर है, वरना हम कुछ भी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। So everything comes down to what do we desire, तो सब कुछ अंत में बात यहाँ आ जाती है, हमारी इच्छा क्या है, whether spiritual or material. आध्यात्मिक या भौतिक। And Krishna, as Paramatma, Super Soul, Supreme Personality, is also within the heart with the Atma. और कृष्णा परमात्मा आत्मा के साथ मौजूद है हृदय में भी। So Krishna is a witness and the judge within the heart of every living entity. तो कृष्णा गवाह है और वो फैसला करते हैं सभी जीवों के हृदय में बैठकर। And Krishna says, from me comes intelligence and knowledge and remembrance. और कृष्ण बताते हैं मुझसे ज्ञान, बुद्धि, स्मरण शक्ति आती है। And also if you want to forget about God, He'll also make you forget about और Him. अगर आप भगवान को भूलना चाहते हैं तो वो आपको विस्मरण भी कराएंगे। So then it comes down to that independence that we have. What is the extent of that independence? तो अब सवाल उठता है हमारी उस छोटी सी आज़ादी का, उस छोटी आज़ादी का कितना बड़ा महत्व है। And it's called, Krishna calls a minute और independence. कृष्णा इसको बताते हैं अल्प स्वतंत्रता। So we can make a choice, तो हम एक निर्णय कर सकते हैं, either Krishna or Maya. या तो कृष्णा या माया। So we think we're so independent and we're so, we have so much independence and so much ability to control so many other things. But really, minute independence means the living entity can make one decision
to either serve Krishna or serve Maya. तो हम सोचते हैं हमारे पास बहुत सारी आज़ादी है, बहुत सारी क्षमता है, बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए, चलाने के लिए, लेकिन असल में आत्मा की बहुत छोटी सी स्वतंत्रता है, एक इच्छा करना कि मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ या मैं माया की सेवा करना चाहता हूँ। And Krishna will see what is your desire and what is the strength of your और desire. कृष्ण देखेंगे आपकी इच्छा क्या है और आपकी इच्छा में कितनी शक्ति है। Because now it's mixed. We have some spiritual desire, we have some material क्योंकि desire. अभी सब कुछ मिला जुला, हमारे पास कुछ आध्यात्मिक इच्छा है और कुछ भौतिक इच्छा है। So our intelligence is a little bit splayed तो out. हमारी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी हुई है। But Krishna is weighing and measuring our desires and the strength of the desire. लेकिन कृष्ण आंक रहे हैं हमारी इच्छा और हमारी इच्छाओं में कितनी शक्ति है। So if somebody sincerely, seriously wants to understand about God, understand about Krishna, then Krishna says, I'll give you intelligence and strength how to come to me. अगर कोई बहुत एकनिष्ठ है, गंभीर है, कृष्ण को शरणागत करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनको समझने के लिए, तो कृष्ण बताते हैं मैं उनको बुद्धि दूंगा, श्रद्धा दूंगा, कैसे वो मुझ तक आ सकते हैं। And if you choose Maya, और अगर आप फिर माया का and you चुनाव want to करते हैं pursue material desire, sinful और desire, भौतिक इच्छा, पाप कर्म की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, then Krishna as Paramatma, Chittaguru, he'll also give you intelligence and strength how to do that. तो कृष्ण परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में आपको बुद्धि देंगे, शक्ति देंगे, कैसे आप उसको कर सकते हैं। So Krishna is still the controller of all of his energies, including the soul itself. और कृष्ण अपनी सारी शक्तियों के नियंत्रण करता है, यहाँ तक कि आत्मा की भी। But he's fulfilling the desire of that soul, of that लेकिन Atma, वो उस आत्मा की इच्छाओं को पूरा करते हैं, either spiritually or materially. या तो वो आध्यात्मिक हो या भौतिक। So, how can we move above all the desires? Not even material, not even spiritual. What is material, what is spiritual? Not even material, How and not even spiritual. So how can we move above all the desire if we don't have? How can we become desireless? How to get rid of all material desire? Like I'm asking, like the desire, it's one is material and one is spiritual. So desire, how can we get above both of these things, above everything? How to get rid of Where we get above 0 point, like it's shunya, it's how to nothing. get rid of all desires. Yes, I see. So what is the difference? And then how to get rid of both? yes. Is that right? तो सवाल पूछना चाहते हैं, Both material and spiritual. Right. Yeah. तो ये आध्यात्मिक भौतिक इच्छा में क्या अंतर है और कैसे मैं इन दोनों से मुक्त हो सकता हूँ, ये इनका असल सवाल है। So it says that anything that we do that is not for the pleasure of Krishna, that is sinful desire, तो बताते हैं जो and कुछ sinful भी activity. आप इच्छा कर रहे हैं, जो कृष्णा को खुश करने के अलावा अन्य कोई भी इच्छा, वो सारा पाप कर्म है। So anything we think and any action or activity that we do that is not Sanatan Dharma, which is not in bhakti for Krishna's pleasure, then that thought and action and activity is a sinful activity. जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, अगर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सनातन धर्म भक्ति नहीं है, तो वो पाप कर्म है, More or less, कम या ज्यादा, gross or subtle. स्थूल या सूक्ष्म। So that's like a nice way to understand that any desire that you want to surrender and serve Krishna in a mood of loving devotion, that is spiritual. यानी कि जो भी इच्छा आपके अंदर एक निष्ठता से, गंभीरता से मैं कृष्ण को शरणागत उनकी सेवा करना चाहता हूँ, ये आध्यात्मिक इच्छा है। And any thought, desire, or activity separate from that, that is all under Maya, that is materialistic. और जो भी कोई विचार, जो कोई इच्छा, जो कोई कर्म इसके विपरीत है, वो माया है, वो भौतिक कर्म है, पाप कर्म है। So spiritual desire is the nature of the soul. तो आध्यात्मिक इच्छा ये आत्मा का मूल स्वभाव है। You cannot kill spiritual desire. आध्यात्मिक इच्छा को आप मार नहीं सकते। Just like you cannot kill, individuality or personality. जैसे आप किसी के व्यक्तित्व को खत्म नहीं कर सकते। So we're eternal servants of Krishna. तो हम कृष्ण के नित्य दास We're हैं। eternal personalities and servants of Krishna with spiritual desire on the platform of the soul. हम नित्य व्यक्ति हैं, नित्य दास हैं, एक नित्य आध्यात्मिक इच्छा के साथ आत्मा के स्तर में। If we forgetting about that, we want to forget about that, then Krishna says, I'll make you forget about that platform. तो अगर हम उसको भूलना चाहते हैं, तो कृष्ण कहते हैं मैं आपको विस्मरण दिलाऊंगा, उस स्तर से भूल पाएंगे। And then we'll be identifying with material, gross and subtle material body, और तब हम अपने आप को ये भौतिक शरीर या सूक्ष्म शरीर मानेंगे, which Krishna says is my
separated material energy. जो कृष्ण बताता है ये मेरी विभिन्न शक्तियाँ हैं. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego. अग्नि, जल, वायु, गगन, धरती और आकाश. So और this is- yeah. मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 मेरी विभिन्न शक्तियाँ हैं. So that's a gross and subtle material energy, तो ये स्थूल और सूक्ष्म शक्तियाँ हैं which is separate from the soul, which is covering the soul. जो आत्मा से अलग है और ये आत्मा के ऊपर ढका हुआ है. So all of that is the mama maya. Krishna says is my तो maya. कृष्ण बताते हैं ये सारी मम माया, मेरी माया है. And Krishna is the controller of his maya. He's controller of his energy. और कृष्ण अपनी माया के अपनी शक्तियों के नियंत्रण करता है. Krishna says the conditioned soul who's covered by false ego, they're thinking that they're doing everything. कृष्ण बताते हैं बद्ध जीव जो अपने मिथ्या अहंकार से ढका हुआ है वो सोचता है कि वो सब कुछ कर रहा है. But in actuality, Krishna says, I'm doing. लेकिन वास्तव में कृष्ण कहते हैं ये मैं कर रहा हूँ. But the false ego makes us think, no, I'm thinking, I'm doing. लेकिन मिथ्या अहंकार ये उनको सोचने को मजबूर करता है मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ. But Krishna is saying, no, those are my energies, body, mind, and soul, and I'm doing, but I'm doing according to what you desire. तो कृष्ण बता रहे नहीं ये मेरी शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और सारे 5 तत्व और आत्मा, और ये आप जैसी इच्छा कर रहे हैं उसके आधार पर मैं उसको पूरा करवा रहा हूँ. So we cannot kill spiritual desire, तो आध्यात्मिक इच्छा को मारा नहीं जा सकता because that's the very nature of being an eternal spirit soul or servant of Krishna. क्योंकि वही आत्मा का नित्य स्वभाव है या एक नित्य दास का यही स्वभाव है. We want to try to purify and get rid of materialistic or sinful desires. हम भौतिक और या पाप कर्म की इच्छाओं को शुद्ध करके उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं. That is where this karma bandhana, this karma and the karma pala, that is happening on that bodily material platform. तो ये सारा कर्म का बंधन, कर्म फल ये शरीर और मानसिक स्तर पे बनता है. So that action and reaction, sinful activity, sinful reaction on bodily platform, that is the root cause of our suffering condition. तो ये कर्म, पाप कर्म शरीर और मन के स्तर पे ये हमारे सारे दुखों का कारण है. So real intelligence means how can I give up sinful desire, sinful activity, and then get free from the sinful reaction. तो असल इच्छा ये होनी चाहिए कैसे मैं पाप कर्म की इच्छा और पाप कर्म की प्रतिक्रिया से मुक्त हो सकूं. Which is causing the ignorance, जिसने मुझे इस अज्ञान में and रखा the है. ignorance is the root cause of our suffering condition. और ये अज्ञान ही हमारे दुखों का जड़ कारण है. So that's what it means to be a devotee, or to ये try होता to है become a devotee. भक्त या भक्त जो होना चाहते हैं ये Is how do we purify our consciousness कैसे हम अपनी चेतना को शुद्ध करेंगे. and get free from the strength of these materialistic sinful desires and attachments. तो कैसे इन भौतिक शक्तियों, भौतिक इच्छाओं और पाप कर्म की इच्छाओं की शक्ति को हम कैसे कमजोर बना And then सकते on हैं. the positive side, how do we engage our intelligence, mind and senses in devotional service towards Krishna? और इसका सकारात्मक पहलू ये है कि कैसे हम अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, कर्म को कृष्ण की सेवा में लगा सकते So हैं. how do we increase our spiritual तो desire? कैसे हम अपनी आध्यात्मिक इच्छा को और बढ़ा सकते हैं. Krishna says if you get a higher taste spiritually, you'll give up the lower taste materially. कृष्ण बताते हैं अगर आपको ऊंचा स्वाद मिलेगा आध्यात्मिक तो अपने भौतिक निम्न स्वाद को आप त्याग कर पाएंगे. And how am I doing? Am I doing all right? कैसा कर रहा हूँ मैं? ठीक कर रहा हूँ. I'm trying to understand. That's good. So one more thing is arising in my mind. Yes. So if there is pap, so there is punya. So if there is sinful, there is also good. So It's like In past activities and past activities. There's sinful activities, pious activities. So there's good and bad. so there is a good activity also and there is a bad. So Pious means that you're doing sinful activity, but you know that Krishna is God. पुण्य कर्म का मतलब ये है कि आप पाप कर रहे हैं लेकिन ये आप जानते हैं कि कृष्णा भगवान है. So, the question I was asking was to move above all the desires. Like there is a switch, so we switch on and off. So, if something can be on, then it can be off also. And if something can be off, it can be on also. So, why go into that stage where there is a point of on and off? Why can't we go in such a stage where there is no point of on and off and we move above all these desires? And we move towards, we say, moksha or samadhi. So
He wants the supreme spiritual peace. He wants to find the supreme spiritual See, the peace. thing is that we're thinking desire is a bad thing. Because we have material desire and we're suffering because of the desire, we're not finding any real peace and happiness. So we're also thinking that on spiritual side, that desire is also problematic and must also be given up. तो प्रभु सवाल कि क्या हम पूरी तरह से इच्छाहीन नहीं हो सकते, सारे भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं से मुक्त कैसे मैं हो सकता हूँ, मोक्ष या समाधि कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। गुरुदेव बता रहे हैं हमारी समस्या है, हम ये सोच रहे हैं कि इच्छा एक गलत चीज़ है, और अगर आपकी इच्छा भौतिक इच्छाओं में हमें अगर बुरा परिणाम मिलता है, हमें कोई शांति नहीं, कोई सुख नहीं मिलता, इतना चिंताएं मिलती है, तो हम सोचते हैं आध्यात्मिक इच्छा में भी ऐसा ही कुछ अनुभव मिलेगा। So why do you think that spiritual desire is so bad that you have to give it up, otherwise you cannot be peaceful and happy? तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आध्यात्मिक इच्छा इतनी बुरी है कि आप उसको छोड़ के कि कोई सारी इच्छा को आपको त्याग करना होगा? Why would you want to give it up? क्यों आप उसको त्याग करना चाहते हैं? I don't want to give it up anything. I don't want to give up either material or spiritual. You don't want to give up anything? No, but I want to get into such a stage where one can be very much subtle, stable, and. My question is, let me ask you a question. मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। You're repeatedly asking आप जो बार-बार जो अपने सवाल पूछ रहे हैं, that your conception is that this peace and happiness will only come when you give up desire, कि आपकी समझ ऐसी है material or spiritual, right? ये शांति और ये सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब आप दोनों इच्छाओं को त्याग कर पाएं, भौतिक और आध्यात्मिक। Is that what you're saying? क्या आपका ये कहने का मतलब है? No. Is that what he's saying? क्या ये Everybody thinks that's what you're saying. सभी यही So सोच रहे हैं, यही कह what रहे are you saying that is not that? हैं। तो आप ऐसा क्या कह रहे हैं जो असल में ये बात नहीं है? So that's the thing which I'm trying to say, that like desire is, it's okay. I'm not saying desire is bad, but I want to move above this state of desire. So even Kabir Das and Tulsidas has said, जिनको कछु नहीं चाहिए वो साहन से सा. So the person who is desireless and don't want anything, he is the master of all. Right, so you're thinking that spiritual advancement and peace and happiness on spiritual platform is beyond desire. तो आपकी ये समझ है कि आध्यात्मिक उन्नति जो सभी चीज़ों से परे है, सारे भौतिक चीज़ों से, और आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक सुख, ये सारी इच्छाओं से परे होकर प्राप्त होता है। Right? ऐसा है या नहीं? I want to understand that. That's what I'm saying. वही वो कह रहे हैं, So मैं ये समझने का I'm प्रयास just trying to understand what you're asking, right? मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। So you're thinking that beyond desires तो आप ये सोच रहे is हैं this state of perfection, which is a state of real peace and happiness on some transcendental platform, right? Beyond desire. That's your conception, right? आपका Yes. ये समझ है कि सारी इच्छाओं से परे जो है, जो स्तर है इच्छाओं के पूरे ऊपर उठ जाना, वो असल में दिव्य शांति, दिव्य सुख का ये परम जो सिद्धि जिसको मानते हैं, ये परम सिद्धि है। But if the soul is eternally a person, लेकिन अगर आत्मा एक नित्य व्यक्ति है and Krishna is Supreme Personality of Godhead, he's also eternally a person. और कृष्ण भी एक परम पुरुष है, एक नित्य व्यक्ति है, So in the Vaishnava philosophical theology, the personalism is superior and it's eternal. So you never lose your individuality or your personality. तो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ये साकार सिद्धांत ये सर्वोत्तम है, और कभी भी अपना नित्य स्थान आप त्याग नहीं कर सकते, ये हमेशा सदैव आपके साथ मौजूद रहेगा। Only instead of material body, you'll get spiritual तो body. इस भौतिक शरीर को ना होने को छोड़कर आपको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। So Krishna has a spiritual body. तो कृष्ण का एक आध्यात्मिक शरीर है, And if we leave this material world, material consciousness, material body, the idea is when the soul leaves this body, we want to go back to Krishna and Krishna Loka and get the spiritual body. तो हमारा ये विचार है जब हम ये भौतिक शरीर को त्याग करेंगे तो ये आत्मा आध्यात्मिक जगत में जाके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेगा कृष्ण लोक में। So in Krishna Loka, in Vaikuntha,
Krishna is there with his eternal associates. They're all individual personalities, but they're eternal. They're eternally situated. तो कृष्ण लोक में अलग अलग व्यक्ति मौजूद हैं अपने अपने व्यक्तित्व के साथ में, और लेकिन वो सभी नित्य रूप में वहाँ मौजूद हैं. And they're engaged in eternal loving service to Krishna. और वो नित्य कृष्ण की प्रेम में सेवा में लगे हुए हैं. And Krishna is reciprocating with his devotees. और कृष्ण Eternally. अपने भक्तों के साथ नित्य रूप से आदान प्रदान कर रहे हैं. So, the body, material body, we want to give that up. तो हम इस भौतिक शरीर को त्याग करना चाहते हैं, And we're forced to give that up और हमें मजबूर होकर इसे छोड़ना भी है एक दिन, because the body is temporary. क्योंकि शरीर अनित्य है. And we want to also purify and get free from materialistic or sinful desire. और साथ ही साथ हम पाप कर्म की इच्छाओं को शुद्ध करके उससे मुक्ति भी पाना चाहते हैं. But spiritual body and spiritual desire, that is eternal. लेकिन आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक इच्छा वो नित्य होता है. But it's based on eternal loving service. You're desiring to engage in eternal loving service towards Krishna. लेकिन वो आधारित है कृष्णा की नित्य प्रेममय सेवा, यानी कि आप इच्छा कर रहे हैं कैसे मैं कृष्णा की नित्य प्रेममय सेवा कर सकूं In the Vaikuntha. वैकुंठ में. So that's our goal. वो हमारा लक्ष्य है. So a body and desire is only bad, you could say, when it's material. तो आप कह सकते हैं ये शरीर और इच्छा तभी बुरी है जब ये भौतिक है. But a body which is spiritual and eternal, that has spiritual desire, that's all good. लेकिन कोई शरीर जो आध्यात्मिक है वो नित्य है, और वो इच्छा जो आध्यात्मिक है ये बहुत ही अच्छा है. Because it's based on eternal loving service to Krishna. क्योंकि ये आधारित है कृष्णा के नित्य प्रेममय सेवा के ऊपर. So that is higher than the conception that you're presenting. तो ये आप जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं उससे ऊंचा है. You have that your presentation is more impersonalistic type of understanding of the absolute truth. तो आपका प्रस्तुति निराकारवाद परम सत्य के बारे में, उसके बारे में ज़्यादा है. So there's no body, there's no desire. कोई शरीर नहीं, कोई इच्छा नहीं. You're just like living in some kind of spiritual energy or something like आप किसी that. तरह की Right? आध्यात्मिक शक्ति में मौजूद हैं. That's called the Brahman realization. उसको कहते हैं ब्रह्मांड का साक्षात्कार. Right? But Krishna, he is known, he is the source of the Brahman. लेकिन कृष्ण को जाना जाता है वो ब्रह्मांड के भी स्रोत हैं. So Krishna says, I am the source of all the spiritual and material worlds. Everything is emanating from me. तो कृष्ण बताते हैं मैं सारे आध्यात्मिक भौतिक जगत का उत्पत्ति करता हूँ, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता So है. the Brahman is one aspect of the absolute truth. तो ब्रह्मांड भी परम सत्य का एक और भाग है. And then there's a Paramatma, और उसके बाद परमात्मा है, which is Krishna in the heart of every living entity. जो कृष्ण सभी जीवों के हृदय में मौजूद हैं. And then there's a Bhagavan. और उसके बाद है भगवान. So it's like you have the sun planet, तो जैसे कोई सूर्य लोक है, right? And then you have the sun god, और फिर आपका एक and सूर्य then you देव have the है, sunshine. और फिर जो है सूर्य की रोशनी. So you're talking about the Brahman, which means the spiritual energy of the Lord. तो आप ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं जो कि कृष्ण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बात कर But रहे हैं. who is the energetic source of that Brahman? लेकिन उस शक्ति का स्रोत कौन है उस ब्रह्मांड का? That is Krishna. वो है कृष्ण, That's Bhagavan. वो है भगवान. So the absolute truth is known in three phases. तो परम सत्य को 3 स्तर से जाना जा सकता है. The Bhagavan, Paramatma, Brahman realization. भगवान, परमात्मा और ब्रह्मांड का साक्षात्कार. So your conception is the Brahman is superior तो आपके विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड सर्वोत्तम है to material body and material desire. भौतिक शरीर और भौतिक इच्छा की तुलना में. But Krishna says, I am the source of that Brahman. कृष्ण बता रहे हैं मैं उस ब्रह्मांड का स्रोत हूँ. So to understand Krishna within the heart of every living entity, and then to understand Krishna, Bhagavan as Supreme Personality of Godhead, Krishna says, there's no truth superior to me. तो कृष्ण बताते हैं सभी जीवों के हृदय में और सभी जगह परमात्मा के रूप में मुझे जान पाना और उसके बाद भगवान के रूप में मेरा साक्षात्कार करना, इससे ऊपर कोई सत्य नहीं. So that's a personal conception. तो ये है साकार रूप का विचार. And Krishna said that's more superior. और कृष्ण बताते हैं ये ज्यादा ऊंचा है. Makes sense? आप समझ पाए? Yes. So far, right? अभी तक ठीक है. He's a smart politician. बहुत चतुर राजनेता. Politicians aren't talking about Brahman, you know what I mean? राजनेता अब ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे They're talking about money. हैं.
वो पैसे के बारे में बात money करते हैं। and power पैसा, and शक्ति, corruption भ्रष्टाचार, and promising everybody everything. सभी लोगों को सारे वादे करो। Right? That's what a politician does. राजनेता यही करते हैं। Yes, yes, yes. हाँ हाँ, Just now coming. अभी आने ही वाला है। For you, everything is possible. आपके लिए सब कुछ करेंगे And we're telling everybody the same thing. और सभी को जाके एक ही बात कहेंगे। That's politicians. ये है राजनेता। And then when you catch them, then they're very good word jugglers. और जब उनको पकड़ लेंगे तो वो बहुत चालाकी से शब्दों को They हेरफेर just करते हैं। start juggling words around just to baffle everybody, you वो know? शब्दों का ऐसा हेरफेर करते हैं, सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं। You're not one of those word jugglers, are you? आप उनमें से शब्दों को हेरफेर करने वाले लोग नहीं हैं। Some people Something, yeah. say that. Huh? Some people say that. Some people say. Do you? What do you say? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आप क्या कहते Are हैं? you a word juggler? क्या आप शब्दों को हेरफेर करते हैं? I just use the words, that's it. Are you using the words for good or for bad? मैं शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, तो आप शब्दों का अच्छे के लिए Always बुरे के लिए for इस्तेमाल good, करते हैं। but people take it according to their own intelligence and senses. He says he always uses the word for good, but it's how people take that, that's up to them. Sure. So you sound like a very simple guy, you know? मैं शब्दों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन लोग अपने तरीके से लेते हैं, तो मुझे बता रहे हैं आप बहुत ही सरल व्यक्ति लग रहे हैं। But Krishna is the intelligence of all of the world's politicians put together. कृष्णा सारे राजनेताओं की बुद्धि को एक साथ मिलाएंगे, उनसे ऊपर उनकी बुद्धि है। So nobody can cheat तो Krishna. कोई भी कृष्णा को ठग नहीं सकता। Even the best Indian politician cannot cheat Krishna. भारत का सबसे श्रेष्ठ राजनेता भी कृष्णा को ठग नहीं सकता। You know, it's funny, I spent some years living in India and then I learned about Indian politics. और बहुत मजा की बात यह है, भारत में मैं कई साल रहा और मैंने भारतीय राजनीति को थोड़ा सीखा। And I was amazed at how sophisticated it is, you know? मैं चौंक गया, ये कितने जटिल लोग हैं। And how clever it is and how manipulative it is. कितने चतुर हैं, कितनी चतुराई से बात रखते हैं। And everything is couched in love and affection and caring, and it's just very, very sophisticated type of cheating, you know? सब कुछ बाहर से प्रेम से स्नेह से ढक के रखते हैं, बहुत ही जटिल तरह का ठगते हैं। They're basically saying, I love you, I'm going to do everything for you, but I'm going to stab you in the back at the same time. मूल रूप से वो कह रहे हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो छुरा भोगते हैं। Not you, but generally speaking. आप नहीं, लेकिन सामान्यतः ऐसा करते हैं। And then when I'm in the United States and I hear these people talking of politics, right? It's like such a joke, you know? और जब मैं अमेरिका गया और वहाँ के राजनेता को बात करते हुए देखा, मुझे लगा ये लोग क्या मजाक करते हैं। And I just listened to these people and I said, oh my God, if they were ever in India, they would get killed, you know? मैं सोचता था कि ये लोग अगर ये लोग भारत में होते, ये तो पूरी तरह मारे जाते हैं। It's like, you know, you're playing 5-degree checkers in chess and they're playing like some checker game, you know? कि यहाँ पे 5 डिग्री का शतरंज का खेल यहाँ भारत के लोग खेल रहे हैं और वो लोग जो है चेकर्स खेल रहे हैं अभी। It's like a child play, you know? जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, ये बच्चे की तरह खेल रहे हैं। That's why they could not take these other politicians in other countries very seriously, you know? इसलिए दूसरे देशों के राजनेताओं को ये ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। Because if you're discussing and making deal making with the most sophisticated politicians, right? And you have to survive in that world, right? क्योंकि अगर आप ऐसे सबसे जटिल लोगों के राजनेताओं के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ आपको बातचीत समझौता करना है, तो आपको इस जगत में फिर रहना सीखना पड़ेगा। Then you're going to become very expert. तो आपको बहुत दक्ष होना पड़ेगा। I know about these subject matters. मुझे इस विषय के बारे में पता है। You can't fool me. मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते आप। A fool cannot fool you. A fool cannot fool you. Yes. Huh? A fool cannot fool you. I am already a fool. So how will I fool you? These word juggling. Juggling words. फिर ये शब्दों का हेरफेर कर रहे Isn't it? हैं, ऐसा कर रहे हैं। Juggling words. फिर शब्दों को ये हेरफेर कर रहे हैं। Actually, I mean it. It's saying he needed. Yeah. That's how you can escape, you know? इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। Not this, not that. ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं।
So we want to be more straightforward, हम ज़्यादा सीधे सीधे बात करना चाहते हैं. right? This is not the politics world. This is absolute truth world. ये राजनीति का जगत नहीं, ये परम सत्य का जगत है. That's why he's bringing all the Himalayan mountains of all of his political intrigue here, you know. तो अपने सारे हिमालय पर्वत का राजनीतिक जो पर्वत है वो यहाँ पापकर पर्वत यहाँ लेकर आ रहे हैं. You better give him some prasadam, you हमें know. उनको अच्छा वाला प्रसाद देना चाहिए. Purify the consciousness. कि चेतना को शुद्ध करनी चाहिए. Did you go in the Ganges? क्या आप गंगा गए थे? You got to go in the Ganges. अब तो गंगा जाना चाहिए. Then instead of a word juggling politician, you'll become Rajarshi. तो आप शब्दों का हेर फेर करने वाले राजनेता के बजाय राजर्षि बन जाएंगे. That's much better. वो बहुत अच्छा है वो. That's to become pure devotee of Krishna, and then you'll be natural leader of the people. तो आप कृष्ण के शुद्ध भक्त और लोगों के एक प्राकृतिक नेता बनेंगे. Because then people will trust you. ये तब लोग आप पे विश्वास करेंगे. Otherwise, nobody trusts politicians. वरना राजनेताओं पे कोई भरोसा नहीं करता. Do you trust politicians? आप राजनेताओं पे भरोसा As a करते हैं? politician, do you trust politicians? राजनेता के रूप में क्या आप खुद राजनेता पे भरोसा करते हैं? No, I am not a politician. No, now he's not a politician. Did I talk you out of that? I trust Krishna. Oh, you got convinced. I trust पहले only अब मैं Krishna. राजनेता नहीं हूँ, मुझे बता रहा था. Krishna. You trust Krishna. कह रहे हैं, मैं कृष्णा में विश्वास करता हूँ. So you're giving up this politics now, huh? अब आप राजनीति त्याग कर रहे हैं. I have not taken up anything, so how will I give up? Oh, we're back to Brahman. मेरे मैंने कुछ भी त्याग नहीं किया. मैंने कुछ भी Everything means nothing and nothing means everything, you know? तो सब कुछ का मतलब है कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं का मतलब है सब कुछ. You are not you, I am not me. I am you, you are me. आप नहीं, मैं हूँ, मैं आप नहीं और आप मैं हूँ. I am you, you are me, and we are God. आप मैं हूँ, मैं आप नहीं हूँ और लेकिन हम सब And now we भगवान have हैं. no desires. और हमारे पास कोई इच्छा नहीं है. That sounds very complicated, बहुत जटिल लगता है सुनने में. doesn't it? ऐसा है Doesn't नहीं. sound peaceful to me. मुझे शांत में नहीं लगता. It says even if you go to Brahman platform, तो कहा जाता है ब्रह्मांड के स्तर पे भी चले जाएं, you cannot stay there. आप वहाँ बने नहीं रह पाएंगे. So even Brahman platform is temporary platform. यहाँ तक कि ब्रह्मांड का स्तर भी अनित्य स्तर है. So it says unless you catch hold of the lotus feet of Krishna, you cannot, you'll have to fall back into the material world. कहते हैं जब तक आप कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ कर नहीं रखेंगे तब तक आपको वापस इस भौतिक जगत में गिरना पड़ेगा. Then you have to go through birth, death, disease and old age. तो आपको जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी से गुजरना पड़ेगा. You cannot get free from this karma pala. कर्म के फलों से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे. You're stuck in the karma bandhana. आप कर्म के बंधनों में फंसे रहेंगे. Didn't you start off saying you want to cut through all the karma bandhana? अब शुरुआत ही आपने ऐसे की थी कि आप सारे कर्म के बंधनों को काटना चाहते हैं Purify this mountain of sinful reactions? और इस पाप कर्म के पर्वतों को शुद्ध करना चाहते हैं. So how will you do it? तो आप कैसे करेंगे इसको? Krishna will help me. Yes, Krishna is helping you. तो कह रहे कृष्णा मेरी मदद करेंगे. मुझे कह रहे कृष्णा आपकी मदद कर रहे हैं. Thank you. I'm happy to see you again. धन्यवाद. मुझे बहुत खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर. First time he just came and he didn't say anything. He just listened very, very closely. पहली बार जब आए कुछ भी नहीं कह रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे. And somehow he came back. Now he's a little more smiling. और किसी तरह से वापस आए, अब ये ज़्यादा मुस्कुराते हैं. Looks like he's developing spiritual desire. लगता है उनकी आध्यात्मिक इच्छा बढ़ रही है And giving up material desire. और भौतिक इच्छा को त्याग कर रहे हैं. Thank you for also joking with me a little bit. धन्यवाद मेरे साथ थोड़ा हंसी मजाक भी करने के लिए. That's also fun. ये बहुत ही मजेदार था. All right, you're good? धन्यवाद. हम ठीक Definitely है. I'm good. All right. You've Thank got you to so become Rajarshi now. आप राजर्षि बनिए. Like Lord Ram. राम जी के जैसा. He's like a real best leader. वो असल श्रेष्ठ नेता है. Why in India they're a little bit like Modi? Why is that? क्यों भारत में लोग थोड़ा मोदी को पसंद करते हैं? Because he has some kind of, it's not exactly pure, but he has some kind of nationalistic, religious, Vedic culture, kind of
presentation, isn't it? तो बिल्कुल पूरी तरह शुद्ध नहीं है, लेकिन उनके अंदर कुछ देशभक्ति या कुछ ऐसा धार्मिक, कुछ पुण्य ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वैदिक संस्कृति का पालन करते हैं, इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं। I'm watching. I'm seeing what's happening out there in this world. मैं भी देख रहा हूँ इस जगत में क्या क्या होगा। Any last thing? कोई आखिरी चीज़? Everybody, yes? He's connecting dots. ये बिंदुओं को वापस जोड़ रहे हैं। Yeah. So my question is, 8 billion people are in this planet. So are these Who's on this planet? 8 billion people are on this planet. 8 billion, and most of them are in India. मैंने अब दुनिया की आबादी 8 अरब हो चुकी है और ज़्यादा आबादी भारत में है। 150 crore, and are their future is already decided? Is the future decided? Yes, are their future is already decided? Yes. They will definitely get old, diseased, and die. तो वो सवाल पूछ रहे क्या उन सभी का भविष्य निर्धारित है? गुरुदेव बता रहे हैं हाँ निश्चित है, सभी लोग बूढ़े होंगे, बीमार होंगे और मरेंगे। That's decided. ये पूरा निर्धारित है। What's not decided is where will the soul go when they leave the body. क्या निर्धारित नहीं है कि उनकी आत्मा कहाँ जाएगी जब वो शरीर को छोड़ेंगे? That's not decided yet. ये अभी तक निर्धारित नहीं है। So where do your soul, where do you want to go when you leave this body? तो आपकी आत्मा आप कहाँ चाहते हैं? आप ये सब शरीर छोड़ेंगे कहाँ जाएंगे आप? Vedic culture means to prepare this life, right, for your next life. What you do in this life determines where your soul goes into the next life. वैदिक संस्कृति का मतलब है इस जन्म में आप जो करेंगे वो निर्धारित करेगा अगले जन्म में आप कहाँ जाने वाले हैं। So where do you want your soul to go in the next body? तो अगले कौन से शरीर में आपकी आत्मा जाना चाहती है? There's 8,400,000 species 84 लाख योनियों में in the material world. इस भौतिक जगत के अंदर 8,400,000 species. 84 लाख योनियों में And there's 400,000 of those are human form. और उसमें से 4 लाख मनुष्य का रूप है। And the human form, you can purify and elevate your consciousness, or you can contaminate and degrade your consciousness. और मनुष्य के रूप में आप अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, या फिर उसको नीचे गिरा सकते हैं और दूषित कर सकते हैं। So other forms, your consciousness is fixed. दूसरे रूपों में आपकी चेतना एक निश्चित रहती है। Whether you're a bird or a beast or an insect like this. आप पक्षी हो, पशु हो, कोई कीट पतंग हो। But in human form, consciousness can be adjusted. लेकिन मनुष्य के रूप में चेतना को ऊपर नीचे किया जा सकता है। So the human form is meant specifically to purify and elevate the consciousness. तो मनुष्य जीवन विशेष करके मिला है अपनी चेतना को ऊपर उठाने का और उन्नत बनाने का। To understand about transcendence or to understand about Krishna. ताकि दिव्य चीजों और कृष्ण को के बारे में समझाना जा सके। And then Krishna says, if you're thinking about me when you're leaving this body, और कृष्ण बताते हैं अगर आप मेरे बारे में सोच रहे होंगे जब आप इस शरीर का त्याग कर रहे होंगे, then you'll come to me. तब आप मुझ तक वापस आ जाएंगे। So to go back home, back to Godhead with Krishna, Krishna says, then you never have to come back to the material world again. तो वापस जाना कृष्ण के साथ कृष्ण के धाम में, कृष्ण बताते हैं आपको दोबारा इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना होगा। You don't have to go to another womb and another body in old age, disease and death. You'll be free from that cycle. आपको दोबारा गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं करना होगा, आपको बूढ़ा नहीं होना होगा, बीमारी नहीं, मृत्यु नहीं, आप इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। And that's the perfection of religion. और ये है धर्म की सिद्धि। So this life is a preparation for the next तो life. ये जन्म अगले जन्म की तैयारी है। And unless we're free from sin and sinful reaction, Krishna says you cannot go back to Godhead. कृष्ण बताते हैं जब तक आप पाप कर्मों के फलों से मुक्त नहीं हो सकते, आप भगवत धाम वापस नहीं So जा सकते। devotee means how do we get purified and uproot sinful desire and sinful reactions. तो भक्त का मतलब है कैसे हम पाप कर्म की इच्छाओं को शुद्ध कर सके, उसको जड़ से बाहर निकाल सके। So that we'll be able to fix our intelligence, mind and senses on Krishna. ताकि हम अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय कृष्ण में निश्चित कर सकें। Especially at the time of leaving this body. विशेष करके जब अपना शरीर त्याग कर रहे हैं। And then Krishna says, if you're thinking about me, I'll come and deliver you. और कृष्ण बताते हैं अगर आप मेरे बारे में सोच रहे होंगे मैं आऊंगा आपको मुक्त करूंगा।
So that's why devotee is peaceful, because they know that they're depending that Krishna will deliver me. इसीलिए भक्त शांत होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि कृष्ण आएंगे मेरा उद्धार करने के लिए। Everybody else is in complete anxiety बाकी सभी लोग पूरी चिंता में रहते हैं because they're worrying about how do I get delivered? क्योंकि वो चिंता कर रहे हैं मैं मुक्त कैसे होऊंगा And where will my soul go? और मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, What is my future? What is my future like? मेरा भविष्य कैसा होगा। Everybody worrying about this life. सभी लोग इस जीवन के बारे में चिंता कर रहे हैं। Real intelligence means prepare for the next life. असल बुद्धिमानी का मतलब है अगले जन्म की तैयारी करना। Because if we don't use the human life, the human form to purify and elevate our consciousness to become Krishna conscious, then you can also lose the human form of life. क्योंकि आप मनुष्य जीवन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपनी चेतना को शुद्ध करके उन्नत बनाने के लिए, इसका मतलब आप अपने मनुष्य जीवन खोने वाले हैं। So it's very risky. तो ये बहुत खतरनाक भी है। So we don't want to misuse the human form. तो हम इस मनुष्य जीवन का गलत We दुरुपयोग to नहीं take करना चाहते advantage of the opportunity और इस मौके का हमें लाभ to उठाना चाहिए। purify our consciousness, elevate our अपनी consciousness, चेतना को शुद्ध करके कैसे हम उन्नत बना सकते हैं to come onto this transcendental spiritual platform. ताकि हम इस दिव्य आध्यात्मिक स्तर पे आ सकें। This is the process of Krishna consciousness, the Yeah. goal of Krishna consciousness. ये है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया, ये है कृष्ण भावनामृत का लक्ष्य। So that has to be cultivated. तो इसको हमें बढ़ाने की जरूरत So है। by hearing and chanting and discussing like this, we're thinking about and we're cultivating and practicing Krishna consciousness. तो इसके बारे में श्रवण और कीर्तन और चर्चा करके हम इस कृष्ण भावनामृत को और ऊपर उठा रहे हैं। And the more we hear and chant about Krishna, the more that this sinful reaction, all this ignorance and all of this suffering will automatically, gradually go away. और जितना ज़्यादा हम कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे, ये सारी पाप कर्म की प्रतिक्रिया, सारा अज्ञान और सारा दुख अपने आप ही चला जाएगा। Krishna says, if you surrender to me, I'll destroy this sinful reaction. कृष्ण बताते हैं अगर आप मुझे शरणागत करेंगे, मैं आपके सारे पाप कर्म के फलों से आपको मुक्त कर This दूंगा। karma phala, Krishna says, I'll destroy it for you. Don't worry. Don't be in anxiety. कृष्ण बताते हैं ये कर्म फला ये सब मैं नष्ट कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। If we're not surrendering to Krishna, then we're dealing with the Himalayan mountains of sinful reactions and the suffering and anxiety that comes from that. अगर हम कृष्ण को शरणागत नहीं कर रहे हैं तो हमें निपटना पड़ेगा इस हिमालय पर्वत जैसे पाप कर्म की प्रतिक्रियाओं से, There's उसके no दुखों से। moments of peace, no moments of real happiness or joy. इसका मतलब कोई हमें क्षण शांति का, असल आनंद का नहीं मिलने It's वाला। just a crisis management. पूरी तरह से अपनी समस्याओं से निपटने का हमें सब So प्रयास करना है। crisis management is your idea of fun. तो अगर ये आपदा प्रबंधन आपको मजेदार लगता है Go for it. तो आप ये करिए। That's everyone can decide as they like, isn't तो ये it? सब जैसा पसंद है वो उनके आधार पे निर्णय कर सकते हैं। All right? ठीक है? I already feel a level up. You already what? He's already feeling a level up. You're feeling better, right? Yeah. And it's only your first day. He's already feeling better. पहले ही दिन में अब ज़्यादा उन्नत महसूस कर रहा हूँ। ये पहला Aren't ही you दिन है। feeling better that he's feeling better? क्या आप लोगों को बेहतर नहीं महसूस हो रहा है कि इनको बेहतर महसूस हो That रहा है? means we're all getting benefit. इसका मतलब हम सभी को लाभ मिल रहा है। Because Krishna made this arrangement, then we all be part of this arrangement, so we all directly, indirectly, we get some kind of benefit or mercy from तो that. कृष्ण ने व्यवस्था बनाई, तो किस तरह से व्यवस्था का भाग हम सभी लोग हैं, तो हम सभी को इसकी कृपा और सभी को इसका फायदा मिल रहा है। If nobody wants to hear from Krishna, अगर कोई कृष्ण से सुनना नहीं चाहता है, then how can the Guru be a purifier medium of Krishna? तो कैसे गुरु कृष्ण का शुद्ध माध्यम बन के कार्य कर पाएंगे? Then the Guru won't have anything to say. तो गुरु कुछ कह नहीं पाएंगे, Because nobody wants to hear from Krishna. क्योंकि कोई भी कृष्ण से सुनना नहीं चाहता। So if there's at least one sincere person कम से कम एक व्यक्ति एक निष्ठ होना चाहिए, hearing and chanting, श्रवण और कीर्तन कर रहा हो, speaking and hearing, बोल रहा हो और सुन रहा हो, then at least that Krishna will still manifest there. तो कम से कम तब कृष्ण वहाँ प्रकट होंगे। The more sincere, simple-hearted people that are there, the more the atmosphere is more conducive. तो जितना ज़्यादा एकनिष्ठ सरल हृदय वाले लोग होंगे तो परिवेश उतना ही ज़्यादा सही होगा। If there's not enough purified minds or hearts consciousness, then it's very contaminated environment. तो अगर पर्याप्त शुद्ध मन, हृदय और चेतना नहीं हो तो पर्यावरण बहुत दूषित रहता है। So it's very difficult for this bhakti to manifest in this type of
association. तो इस तरह के संग में भक्ति का प्रकट होना बहुत ही कठिन होता है. Has to be simple, non-envious hearers and chanters. सरल और द्वेषहीन श्रवण करता और कीर्तन करने वाले को होना चाहिए. That's the prerequisite. ये है पहली जरूरत. That is possible. तब ये संभव है. All right. Any last thing? ठीक है. कोई आखिरी चीज? I always think that why I face these types of problem in my life. Why you have problems? Why I am facing these types of problem in my life. Because you have a material body. तो सवाल पूछ रहे हैं क्यों मैं समझ पाता हूँ कि क्यों मेरे जीवन में हमेशा ऐसी समस्या आती है. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि क्योंकि आपका ये भौतिक शरीर है इसीलिए. I'm not asking any question. I am just saying my opinion that I used to think that I have so many problems in my life and I am struggling so much in my early age. But now Sounds like you don't like to study, man. This is becoming clear. He doesn't like to study, you know. तो कह रहे हैं मैंने अपने जीवन की शुरुआत में इतनी कठिनाई देखी और मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं अपना विचार रख रहा हूँ. गुरुदेव बता रहे हैं लग रहा है सुनने में आप पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं. This is a reoccurring, part of the discussion here, you know. तो ये This point's popping out, isn't it? ये असल बात सामने आ रही है. पढ़ाई लिखाई करना नहीं चाहते. There's always like some suffering and studying. It's always like mixed, you know. हमेशा बात कर रहे हैं मैं बहुत दुख में हूँ, पढ़ाई करना पड़ता है. no, I love study. Nah. नहीं मुझे पढ़ाई से बहुत प्रेम है. That's why I got ranked into between 1000. What is it? He got like all India rank. West Bengal rank. He got all of the West Bengal under like 1000 ranks. Like Sure. We get a smart boy here. अरे मुझे पूरे वेस्ट बंगाल में 1000 के अंदर जो है मुझे रैंक मिला. तो मुझे बता रहे हैं हमारे Now rank you're को going to चला get के the रखा है. other 999 to come and surrender to Krishna. अब बाकी जो 9999 हैं उनको यहाँ कृष्णा को शरणागत करने के लिए लेके आ रहा Then हूँ. you'll be number 1 amongst those 1,000. तो उन 1000 के बीच में आप एक सबसे नंबर 1 पे Krishna will say you're number 1. If you get the rest of them to come here to Mayapur, अगर आप बाकी उन 999 को मायापुर लेके आते हैं तब आप कृष्णा आपका नंबर 1 मानेंगे. you'll be number 1 अब आप नंबर 1 in Krishna's book. कृष्णा की किताब में. Actually, in our generation, most of the persons are down. Most of the persons are dumb. मेरे वर्तमान में ज़्यादातर लोग जो है बेवकूफ़ हैं. It's so simple, It's so honest, ये It's सरल है, इतने fantastic. ईमानदार है, बहुत अद्भुत है. No, simple means very intelligent. नहीं सरल का मतलब होता है असल बहुत बुद्धिमान. No, seriously. नहीं बहुत गंभीरता If से. you're very simple, it means you actually have a good intelligence. अगर आप बहुत सरल हैं इसका मतलब आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है. I just want to say that I understand now that Krishna is preparing me for a big thing. 999, you gotta convince. This is the big thing, I'm telling you. कह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कृष्णा मुझे बड़ी चीज के लिए तैयार करे. तो गुरुदेव बता रहे वही तो मैंने कहा 999 बाकी जो है उनको आपको यहाँ लेकर आना है. आपको आश्वस्त करना है. ये बड़ा चैलेंज है आपके लिए. I will try. Yeah, you try. कह रहे मैं प्रयास करूँगा. You make those dumb people smart. उन गधे लोगों को आप बुद्धिमान बनाइएगा. If they become smart, then the competition will rise. You're talking to that politician too much. तो कह रहे हैं अगर वो बुद्धिमान हो जाएंगे तो प्रतियोगिता बढ़ जाएगी. गुरुदेव कह रहे हैं आप वो राजनेता से ज्यादा बात कर रहे हैं. On one side he's talking so simply, then the other one is like, why I should make them smarter, then I'll have more competition. एक तरफ बात कर रहे हैं बहुत सरल और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं क्यों मैं इनको बुद्धिमान बनाऊंगा, मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा, यहाँ प्रतियोगिता बढ़ जाएगी. Just see, what happened to our little monk, देखिए क्या हो गया हमारे छोटे साधु को. So give to him. Give to this little monk. छोटे साधु को दीजिए. No, give him one. No, thank you. No, you take it. I'm okay. No, take it. नहीं आप Take it. This is your prize. Hari-katha! It looks good. अच्छा लग रहा है.
It's a little heavy though, right? भारी है लेकिन। No, but I feel uncomfortable. No, it's Krishna's mercy. You have to take it. ये कृष्णा की कृपा है, आपको इसको लेना चाहिए। Okay, thank you. But I appreciate your mood. मैं आपके भाव की बहुत सराहना It's करता a हूँ। nice humble mood. बहुत ही विनम्र भाव है आपका। So we just got to keep that, that going in spiritual side, so you won't see anybody as your competition. तो हम इसको आध्यात्मिक भाव जारी रखेंगे ताकि आप आध्यात्मिक प्रतियोगिता के रूप में ना देखें। Of course, they have transcendental और competition, अवश्य आध्यात्मिक प्रतियोगिता होती है, but that's another topic. लेकिन ये एक और दूसरा विषय है। There's no enviousness in transcendental competition. दिव्य प्रतियोगिता में कोई द्वेष नहीं होता। Everybody is inspired by other person's surrender and service. सभी लोग और ज्यादा प्रेरित होते हैं दूसरे की शरणागति से, उनकी सेवा से। So it makes us want to become better and do better, तो वो उनको और ज्यादा बेहतर करने के लिए और बेहतर बनने के लिए प्रेरणा देता so है। we can all get mercy. तो हम सभी को कृपा मिल सकती है। All right? ठीक है, Thank you. धन्यवाद। Hari-katha. All right, yes? Enrico, everything good? रिको सब ठीक है? Yeah? I really had some question, but next time. It flew out? No. Next time. Yeah. Then we can get into it, Be better. तो अगली बार Everyone- सवाल पूछेंगे। Yes. I'm interrupting him too much, मैं इनको कुछ ज्यादा ही रोक रहा हूँ। Because sometimes I'm not used to always having translator. क्योंकि कई बार मुझे हमेशा आदत नहीं है अनुवादक की। I do the same thing when I go to Russia. I start interrupting the translator because then I forget I have to wait, तो ये मैं रूस में भी करता हूँ, मैं अनुवादक को थोड़ा बीच में रोक देता हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ मुझे थोड़ा अनुवाद के लिए इंतजार भी करना है। But then I used it to my advantage लेकिन मैं इसको अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, because it gave me time to think more, ये मुझे समय देता है और ज्यादा सोचने के लिए। So then I can pray to Krishna while he's talking. Krishna, okay, we got to understand this properly, right? जब तक वो बात कर रहा था तो मैं कृष्णा से प्रार्थना कर रहा था, हमें मदद कीजिए ताकि हम सही तरीके से समझ पाएं। So buying me a little time, right? मुझे थोड़ा समय मिल जाता है। It's like when you ask a politician a question. जैसे किसी राजनेता को कोई सवाल पूछा जाता है, What's the first thing they always say? तो सबसे पहली चीज वो क्या कहते हैं? That's a very interesting question. बहुत दिलचस्प सवाल है। Thank you very much, everybody. धन्यवाद सभी Appreciate का, it. बहुत सराहना करता हूँ। Shri Shri Gauritai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Govinda Swami, Srila Gurudev ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Premanande ki, Hari Hari Bol. Thank you, everybody. Srila Prabhupada, Srila Gurudev. If we eat these cookies, are we all going to be worrying about his wife? अगर हम सब खीर खाएंगे, हम सबको इनकी पत्नी की चिंता होने लगेगी। I mean, these cookies so much about, you cook them thinking about his wife and you're going to be eating and saying, I wonder how that poor girl is. तो हम सब इनके हाथ में खीर खाएंगे, जब कुकी बनाते समय इनकी पत्नी की चिंता करते हैं। Is that the trick? Get everybody praying for your wife? तो ये इनका ख्याल है, सभी लोग इनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। Two beats? इसको दोनों देना है। Smart boy. If I give you this cookie, don't think I need you to be my disciple. अगर मैं आपको खीर दे रहा हूँ, ये मत सोचिए मैं आपको चाहता हूँ आप मेरा Just शिष्य बने। Mahaprasad, just cookie. महाप्रसाद है, बस कुकी No देना है। strings attached. इसके पीछे कोई धागे नहीं लगे। I have to always give that disclaimer. ये हमेशा अंत में मुझे देना पड़ता है। Small boy, big boy. Oh. Gotta give him another one. Are we ready? All right. कैसा रहा? थैंक यू। All right, Mataji. Your spirit souls too, आप लोग भी जीवात्माएं हैं, ये You need mercy just आप as लोगों well. को भी कृपा की जरूरत है। Everybody needs mercy. सभी को कृपा की जरूरत है। Congratulations. आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। For what? इसके For लिए everything. सभी चीजों के लिए। I'm juggling words, man. अभी मैं भी सब लोगों को हेल्प कर रहा हूँ।
Juggling words. अभी शब्दों को हेरफेर कर रहा हूँ. All right. ठीक है. Thank you very much. बहुत धन्यवाद. Thanks for coming back. धन्यवाद आपका वापस आने I was के लिए. wondering about you. मैं आपके बारे में चिंता कर रहा हूँ. Don't do any Indian politics on me, man. भारत की राजनीति मत करना मेरे साथ. I'm just joking. आई बस मजाक कर रहा हूँ. Sometimes I like to joke. कभी कभी मुझे मजाक करना I don't पसंद know. है. Nice to see you. अच्छा लगा आपसे मिलकर. Why shouldn't we have a little fun, you know? और थोड़ा मजाक क्यों ना करें? Why should it be so dark and not happy? क्यों एकदम अंधेरा और खुश नहीं होकर करें? The ultimate goal is happiness. Yeah, we should be happy, right? हमें खुश होना चाहिए. I know. Are you happy? क्या आप खुश हैं? You have to be happy to come here. यहाँ आने के लिए आपको खुश होना होगा. If you're not happy, you gotta want to be happy. अगर आप खुश नहीं, आपको खुश होना होगा. Then you can stay. तब आप यहाँ रह सकते हैं. Are you happy? आप खुश हैं? Huh? Are you happy? आप खुश हैं? Look at me. मेरी तरफ देखिए. Look at me. Are मेरी you तरफ happy? देखिए. आप खुश हैं? You want to be happy? आप खुश होना चाहते हैं? Huh? Today he was dancing in I'm so mean, aren't I? मैं कितना करूँ? I'm such a bad person. मैं बहुत ही बुरा व्यक्ति हूँ. They said I'm very bad, very But I dangerous. like you. But I like you. Not bad, huh? मैं इतना बुरा नहीं. That's because I'm giving you cookies. क्योंकि मैं आपको एक कुकी दे रहा हूँ. Did everybody get? सभी को मिल गया? Everybody got? सभी को मिला? Come on, you want आइए. more? आपको और चाहिए? The more I give, the more I won't eat, you know? जितना ज़्यादा मैं दूँगा उतना मैं कम खा पाऊँगा. All right, everyone got. Did you get it? सभी को मिला? Oh, what? She wants more. उनको और चाहिए. Thank you, everybody. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का. Big kid. बड़ा हाथी. Dancing white elephant. नाचता हुआ सफेद हाथी. He's from the UK, you know? ये यूके से है. So we're just coloring. तो हम इनको थोड़ा सहन करते हैं. Their philosophy is divide and conquer. इनका सिद्धांत है फूट डालो और राज करो. Not his. इनका नहीं है लेकिन. इनका नहीं है. I'm sorry, I got a little geopolitical. Sorry about that. मुझे क्षमा कीजिएगा मैंने थोड़ी राजनीति की. Because of his इनके association, संघ के कारण ऐसा हुआ. it was rubbing off on me a little Everybody bit. blames on me. I can blame it on you, right? सभी लोग मुझे दोस्त हैं. मैं आपसे I never would have thought about that. मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था. Thank you, everybody. धन्यवाद सभी का. Devotees from Nepal. Oh, really? Nice to meet you. Which part of Nepal? On the border side, but maybe like 5-6 hours from my place. You know him, huh? We met first time. Really? Yeah. Christians already? And he wants to invite you to Nepal. Oh, God. Bol! I'll come. I want to come to Nepal. That's our plan. All right? I'll I'll talk to him. Yeah, you talk to him. All right? And he'll talk to me. And we'll go to Nepal by Krishna's mercy. I look forward to that. I will. Thank you, everybody. धन्यवाद सभी का. Shri Gurudev ki Klassenwahl 2 timer 57